bringing his opponent down, leveraging that core strength. Upper body superiority definitely working for Ignatius. Nice contact, straight punch. There you go once again. And when you have such a partisan crowd, it takes your performance to the next level. We are barely 20 seconds into this contest and Ignatius has stamped his authority all over Ripan Sarkar, not giving him an opportunity to settle. There you see the pressure. Right away, faking with the right hand punch and immediately going for a takedown. 4 quick takedowns. And that's a count. देखो 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग है। 8 सेकंड के बीच में रेफरी पूछता है खिलाड़ी से, जब भी वह अपनी सहमति जाहिर करता है तो मुकाबला सुचारू रूप से चलता रहता है। जब भी वह अपनी सहमति नहीं देगा तो 10 तक होगा केओ। तो यहाँ पर उन्होंने सहमति दे दी थी। 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग और उसके बाद ये मुकाबला चलता हुआ 8-0 का स्कोर हो चुका है। बढ़त बनाने में कामयाब है यहाँ पर अभी तक ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी जो कि मेघालय के हैं। मेघालय के ये खिलाड़ी बढ़त बनाने में कामयाब। 9-0 का स्कोर हो चुका है। कोई अंक अर्जित नहीं करने दिया उन्होंने अभी तक त्रिपुरा के खिलाड़ी को सफलता के साथ। 2 अंक और सुनिश्चित उनको मिलेंगे। यहाँ पर 10-1 का स्कोर है, मगर यहाँ पर बढ़त बहुत अच्छी है। रेफरी द्वारा रोका गया। काउंटिंग, दूसरी बार काउंटिंग। ये मुकाबला यहाँ पर रोक दिया जाएगा। मेरे को नहीं लगता ये मुकाबला अब आगे चलेगा। रेफरी के जब तक बाउट नहीं कहेंगे तब तक मुकाबला शुरू नहीं होगा। चोटग्रस्त है और यहाँ पर विजयी घोषित किया जाएगा मेघालय के खिलाड़ी को, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी त्रिपुरा के खिलाड़ी को एक तरफा खेलते हुए त्रास किया। चोटग्रस्त जरूर है त्रिपुरा के खिलाड़ी, मगर बात करें खेल कौशल की तो उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया मेघालय के खिलाड़ी ने। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से गिराने में कामयाब हुए। पंचों की अगर हम बात करें, बहुत अच्छे सटीक उनके टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड हुए थे पंच। किक का अगर प्रदर्शन देखें तो बहुत ही सुंदर बैक किक, फ्रंट किक का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस खिलाड़ी ने अपने खेल कौशल से सभी को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। Excitement on and off the platform. So that brings us to the end of proceedings in the first set of competition here in the 48 kg category. And this crowd was treated to a very dominant performance by the host Meghalaya, being represented by Ignatius Loyola Raji. And there you can see the crowd not just enjoying live proceedings, but you can also catch these bouts on the YouTube platform as well. So many of them also being able to see the bouts once again online. So it's a phenomenal experience. You can watch it live. You can also scroll back and see action online as well. That's the beauty of technology. और जूरी और रेफरीज आपस में मंत्रणा करते हुए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपस में एक दूसरे से मंत्रणा कर रहे हैं। आगे की रन जो खेल कौशल है, पहले मुकाबले की अगर हम बात करें तो पहला सिक्किम को के खिलाड़ी के साथ था मुकाबला, तो 22 दिया गया है पहले मुकाबले में 52 किलो भार वर्ग में। और अब मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाएगा ये है निर्णायक 5 ये स्कोरर
जो अंक प्रदान करते हैं जजेस, 5 जजेस होते हैं किसी भी खेल कौशल में, और 5 जजेस द्वारा अंक प्रदान किए जाते हैं खिलाड़ियों के खेल कौशल को का मूल्यांकन करते हुए। यह है टीम के नागालैंड और मिजोरम की टीम यहाँ पर बैठी हुई दर्शकों की दीर्घा में। और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो अगला मुकाबला मिजोरम और मणिपुर के मध्य होगा 52 किलो भार वर्ग का। पहले मुकाबले में यहाँ पर बाई दे दी गई, वॉक ओवर दे दिया गया है। वॉक ओवर दिया है सिक्किम के खिलाड़ी को। और मुकाबला जो होगा 52 किलो भार वर्ग में, पुरुष भार वर्ग का, मिजोरम और मणिपुर के मध्य। विपिन, काफी दर्शकों की अगर हम बात करें तो काफी उत्साहित हैं यहाँ पर, महिला दर्शकगण यहाँ पर आई हुई हैं। और ये मोबाइल पर जो आप देख रहे हैं सभी दर्शकगण, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यहाँ पर दूरदर्शन प्रसार भारती का, दूरदर्शन स्पोर्ट्स चैनल का, तो वो लाइव टेलीकास्ट भी देखते हुए प्रसार भारती की साइट पर, ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कि दूरदर्शन की ओर से सीधा प्रसारण, और सीधा प्रसारण लोग काफी उससे मैं कह सकता हूँ प्रसन्नचित हैं, बहुत लाभान्वित है कि जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो अपने घर पर बैठकर इन रोमांचकारी मुकाबलों का आनंद उठा रहे हैं। So right, we're getting all set for the next division and calling the fighters to action in the 52 kg category for men. Like Sanjeev's already mentioned, a walkover for Nagaland in the first set. So the second bout, it's going to be between Mizoram and Manipur. Mizoram on your screen there in red. Luakai, and here it's the fighter from Manipur, James. Clear height advantage for James from Manipur, and leveraging that pivot there, pulling his opponent down. And sometimes when you get off your feet very early, things become a little tricky. Beautiful move there. Taking his opponent down, connecting with the kick, and then using that knee hold to pull him down. Difference in class. We were talking about that height advantage, right? And you can see that the fighter from Mizoram will have to fight in the pocket, will have to be a lot closer. And James will try to use those long extensions, those limbs, to get maximum contact from a distance. You can see the difference in the shuffle when we were talking about the 48 kg category, more broader stances. Whereas here you can see James with that more vertical approach, wanting to use the distance that he can maintain with those long legs. Going for that push kick attempt, not connecting. Nice thigh connect. And it's not just a single play, connecting on the thigh and then immediately following up. And if you can see that on your screen, you can see a blue patch on the fighter's left thigh. Lukai clearly feeling the impact of those kicks from James. You can see on your screen the left foot bruised. You can see the bruise at the back. And immediately presence of mind, beating him in towards that corner. And the moment he overcommits, pushing him through. This is going to be another one-sided contest. 10-1 already. One takedown away from ending this contest is James. And with that connect, 2 more points.
What a dominant performance. Manipur definitely standing out strong here, not giving Mizoram any opportunity. Seeing that blue platform and the blue fighter taking his game to the next level. What an amazing performance by James Mitay. Manipur being coached by an Arjuna awardee as well. That pedigree clearly showing through in that particular contest. (11-1). Dominant, unstoppable. And to a large extent, we are all just waiting for the formality of the official calling these fighters back up. And I won't be surprised if the official calls this contest to a close. And it's going to be a mere formality. One contact, and this contest will come to an end. Push kick. Right down the middle. That's what happens when you have a front-on stance. You ideally want to be side-on and giving less of a target to your opponent. What targeted striking, head kick there. And if you're wondering why this competition is continuing, it's because in this particular category, these are 5-round contests. No stopping this guy. Nice move there. And it's not the first offense, it's not the second. Let's see if we can spot it on your screen. You'll see the first offense with the arms, then followed up with the leg, and then going for the takedown as well. Triple threat. I see, nice calf kick. Smooth contact. Leading with the punch and then immediately throwing that kick to the thigh. Following that up with showcasing his dominance on the platform. Waiting for his opening there. Spotting that gap there, you see. Calling him in, clean flush connect. On your screens, easy to spot the shin connecting onto his face. And the official giving him a count. And at some point of time when the contest is so one-sided, you really begin to worry about the fighter's safety. Because clearly there's a difference in class here. Brilliant, both of them giving it their all. And one's heart goes out to Lakai. He's been getting a proper dressing down from James, but even then still hanging in this round two. बिल्कुल विपिन, अगर पहले राउंड की बात करें तो मिजोरम के खिलाड़ी ने केवल 1 अंक प्राप्त किया था और दूसरे अगर मणिपुर के खिलाड़ी की बात करें तो 11 अंक प्राप्त किए थे और दूसरे राउंड में यहां पर 10-1 का स्कोर है, यानी कि बढ़त बनाने में कामयाब हैं अभी तक मणिपुर के खिलाड़ी। मिजोरम के विरुद्ध लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता उनकी अगर हम बात कहें तो यहाँ पर विसल का संकेत, यानी कि ये राउंड समाप्त हुआ। ये तीसरे राउंड तक जाएगा ये मुकाबला, नहीं रोका गया है इस मुकाबले को विसल के संकेत के साथ। यहाँ पर विजेता घोषित किया जाएगा। यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ब्लू कॉर्नर के मणिपुर के खिलाड़ी ने इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए हैं और यहाँ पर अंकों के आधार पर इस मुकाबले को 12 से अधिक अंकों का अंतराल आ गया है, तो यहाँ पर ये मुकाबला रोका गया है। तो इस मुकाबले को विजय श्री में बदला है मणिपुर के खिलाड़ी ने अपने पक्ष में मिजोरम के विरुद्ध। अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन, 52 किलो भार वर्ग का ये पुरुषों का
पहला मुकाबला था। इससे पहले 48 किलो भार वर्ग के मुकाबले खेले गए थे, 4 मुकाबले खेले गए थे 48 किलो भार वर्ग के। पहला मुकाबला 52 किलो भार वर्ग का, पुरुष भार वर्ग का। और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के मध्य मुकाबला होगा। देखना होगा यहाँ पर खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार। यहाँ पर ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी दिखते हुए अरुणाचल प्रदेश के, और उनको चुनौती दे रहे हैं त्रिपुरा के। रेड साइड के ये खिलाड़ी त्रिपुरा के। गम शील्ड, जो सुरक्षा कवच हैं, हेड गियर, गम शील्ड, कप प्रोटेक्टर, ग्लव, ये ऐसे सुरक्षा कवच दिए जाते हैं, सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं। हेड गियर जो आपकी हेड इंजरीज को बचाता है, टीथ गार्ड जिसे हम कहते हैं, गम शील्ड वो आपके दांतों की और जीभ की सुरक्षा के लिए होता है। कप प्रोटेक्टर जो आपके लोअर एब्डोमिनल के प्रोटेक्शन के लिए है। और आपका चेस्ट गार्ड पूरी तरह से आपको चेस्ट और आपके एब्डोमिनल को बचाने के लिए। ये उपकरण बहुत ज़रूरी हैं किसी भी खेल कौशल के लिए, यहाँ पर मुकाबले को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है इन सुरक्षा उपकरण जो दिए जाते हैं उनको जांचना परखना कि यह सही तरीके से बंधे हैं या नहीं, खेल को किसी तरीके से बाधित ना हो। अगर वह खुले हुए होंगे, लूज होंगे तो खिलाड़ी को नुकसान हो सकता है। तो नुकसान से बचाने के लिए सबसे पहले रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है सेव द प्लेयर, यानी कि खिलाड़ी की सुरक्षा। और उसके बाद अब ये पहले चक्र की प्रारंभ हो चुका है। पहला चक्र त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के मध्य चलता है ये मुकाबला। एक अच्छा प्रयास पकड़ने का प्रयास है। यहाँ पर 2 सेकंड की समय अवधि होती है। जब आप क्लिंच करते हैं तो क्लिंच करने के बाद 2 सेकंड के अंदर अंदर आपको एक्शन करना अनिवार्य है। अन्यथा आप अगर एक्शन नहीं करते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी को 1 अंक प्रदान कर दिया जाएगा। 2 अंक यहाँ पर सुनिश्चित है प्रदान किए जाएंगे। बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर, एक अच्छा प्रयास और उस अच्छे प्रयास में अंकों में परिवर्तित किया। प्रयास अच्छे, लगातार वही रणनीति इस्तेमाल करने की कोशिश अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी की। ग्लव्स की अगर हम बात करें तो 8 ऑन्स के ग्लव्स महिलाओं में यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर ये पुरुष भार वर्ग जिसमें 12 ऑन्स तक के ग्लव्स को इस्तेमाल किया जाता है। 2 अंक यहाँ पर दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी को, जिन्होंने ग्राउंड में कामयाबी होते 2 अंक और सुनिश्चित है उनको मिलेंगे, प्राप्त होंगे, क्योंकि दूसरी बार उन्होंने प्लेटफॉर्म पर गिराने का प्रयास किया था, मैट पर गिराया था। तो जब आप अपने प्रतिद्वंदी को गिराते हैं, पकड़कर गिराते हैं, बिना किसी रुकावट के फुल फोर्स के साथ लिफ्ट करते हैं, तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर अंकों में बढ़त बनाने की कोशिश, किक का प्रयास, रेफरी द्वारा निर्देश, रोका गया मुकाबले को। लगातार प्रयासरत यहाँ पर सीधे हाथ से स्ट्रेट जैब का प्रयोग, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्ट्रेट जैब हुक का प्रयोग करना चाहते हैं। साइड किक अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी की, साइड किक एंड फ्रंट किक। अगर आपकी किक बिना किसी रुकावट के टारगेट एरिया पर लैंड करती है तो सुनिश्चित है आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। और अगर बिलो द बेल्ट यानी कि कमर से नीचे प्रहार क्षमता रहती है किक की, तो आपको 1 अंक प्रदान किया जाता है। तो यह बहुत जरूरी, आप किस तरीके से प्रहार क्षमता रखते हैं और यहाँ पर गिराने में कामयाब हैं, सुनिश्चित है अंक प्रदान किया जाएगा। तो एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर, उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के। बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं यहाँ पर। और ये पहले चक्र की समाप्ति, पहला राउंड 2 मिनट का समय अवधि जो कि समाप्त हुआ। 1 मिनट का अंतराल विराम, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए अरुणाचल प्रदेश के प्रशिक्षक। 6-0 का स्कोर है, यानी कि त्रिपुरा के खिलाड़ी ने अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है। तो यहाँ पर बढ़त की अगर हम बात करें तो 6 अंक अभी तक ले पाने में कामयाब हैं 52 किलो भार वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी। Chakku has been dominant, and when you are in control of a bout like this, there is very little that your coach and manager really has to say. And you can see a lot more calmness in that blue corner.
each of these state associations bringing in their own contingent of officials. Because Wushu as a sport needs a lot of official presence. Watch out for Chakpu from Arunachal. It's almost connecting there, glancing blow to the head of his opponent. Double leg lift, throwing Anirban onto the floor. You can see Anirban's movement, shuttling backwards, and Chakpu relentlessly pressurizing him. You see the lack of experience showing for the fighter from Tripura. And under relentless pressure from Chakpu, focusing too much on the glove work. And Chakpu's using his experience, immediately goes for a lift, gets a nice hold, double leg hold, and then taking him to the mat again and again. 5-0. Using upper body strength there, just dragging him down. Solid contact there on the thigh. We could hear it here in the commentator's box. Switching his stance now, going back to orthodox. Looking at his movement, I think he prefers fighting southpaw. There we see him switching back to southpaw. Now conventional. Let's see how he launches this attack. And here Anirban needs to bring some offense to the table. Bringing up the style quotient, Chakpu now. Racing away to 12 points. And when the gap becomes 12, the victor needs to be announced, and a professional, thorough performance by Chakpu Takam for Arunachal. And we've been talking about this contingent, the team from Arunachal being very strong in these Wushu competitions, and that's what we've seen in both these categories, the 48 kg category and in the 52 kg category. Arunachal clearly head and shoulders above the competition. So that's the format in these games. Each of these states have the opportunity to send in one fighter. States fighters in each weight category. Just as we wait for proceedings, stepping up for Assam, Jil Nazari. And Jil will be taking on the hometown star from Meghalaya in blue. Hello. और अगला मुकाबला जो कि असम और मेघालय के मध्य हो रहा है, दोनों के मध्य ये मुकाबला चलता हुआ 52 किलो भार वर्ग का ये इस वेट कैटेगरी का आखिरी मुकाबला है। 52 किलो भार वर्ग की वेट कैटेगरी का।
प्रयास अच्छे और एक दूसरे को क्लिंच करते हुए, क्लिंच करने के बाद यहाँ पर गिराने का प्रयास था, पूर्णतः सफलता हासिल नहीं हुई। जब भी आप लिफ्ट करें तो आपको यह देखना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आपको फोर्स को जनरेट करना होता है जब आप पकड़ते हैं। गिराने का बाहर गिराने का प्रयास था, इसमें भी नाम कोई अंक नहीं जाएगा। शोइंग होना चाहिए, दिखना चाहिए कि आपकी तकनीक, आपने जो रणनीति प्रयोग की है वो पूरी तरह से क्रियान्वित होती है या नहीं। जैसा कि मैं बता रहा था, जब आप लिफ्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करते हैं और फिर आप जब लिफ्ट करते हैं तो वह लिफ्ट जो है वो मान्य लिफ्ट मानी जाती है। तो ये देखना बहुत जरूरी। असम ने अभी 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। मेघालय के खिलाड़ी के पास कोई अंक नहीं है अभी तक। 2-0 का स्कोर चलता हुआ। बढ़त बनाने में कामयाब रेड पोशाक में, रेड कॉस्ट्यूम में असम के और मेघालय के जो कि नीली पोशाक में हैं, ब्लू साइड के खिलाड़ी। स्ट्रेट जैब के साथ सिंगल लेग अटैक के साथ स्ट्रेट जैब लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से डबल पंचेस का प्रयोग कर रहे हैं। 1-2-1 की गेम खेलना चाह रहे हैं, मगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा। हुक और अपरकट, जब क्लोज डिस्टेंस पर आप जाते हैं तो हुक और अपरकट का भी प्रयोग करें तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। जब इस समय क्लिंच पोजीशन में यहाँ पर आपको अपरकट का प्रयोग करते हैं तो बहुत सुनिश्चित रहेगा। गिरा पाने में कामयाब। 5-1 का स्कोर। 1 अंक अर्जित किया है अभी मेघालय के खिलाड़ी ने, और यहाँ पर होल्ड किया था, तकनीक अपनी लगाई थी, लात पकड़ने में कामयाब हो गए थे मगर उस लात को पकड़कर गिरा पाने में कामयाब नहीं हुए। तो यानी कि जब आप अपनी कोई टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पूरी तरह से जब तक उस टेक्निक को क्रियान्वित नहीं करते हैं तो आपको अंक नहीं दिए जाते हैं। तो आप जो भी खेल कौशल दिखाना चाहते हैं उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करें। दोनों घुटने आपके मैट से लगने चाहिए, तभी आपको अंक दिए जाते हैं। तो मैट पर जब आपके दोनों घुटने अपने प्रतिद्वंदी के घुटनों को लगा पाने में कामयाब होंगे तो यहाँ पर अंक प्रदान किया गया। स्ट्रेट जैब के साथ पुनः गिराने का प्रयास ब्लू कॉर्नर के खिलाड़ी का, मगर रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें। स्ट्रेट जैब सिंगल पंच अटैक है, सिंगल पंच अटैक करके आप लीडिंग पंच तो कर सकते हैं। अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। टारगेट एरिया पर पूरी तरह से जब आपका फोर्सफुली बिना किसी रुकावट के पंच लैंड होता है वही टारगेट पर आपको अंक प्रदान करता है। तो विशेल के संकेत के साथ यह चक्र समाप्त। Assam came out flying off the blocks there, Jiril Nazri. But towards the end of this bout, you saw a resurgence by the home side, Meghalaya. Watch out for the injury. You can see a little bit of hobbling on the left leg. Nazri not very comfortable placing his weight on that particular foot, and it's going to be interesting to see if Meghalaya can use that to their advantage in this round 2. It's not really one-sided now. It's a 7-3 split when it comes to the points. Definitely at one point of time it was very comfortable for Assam, but the moment that injury came into play, you saw Meghalaya turn up the tempo and start pressurizing Nazri more and more. Let's see if he's going to place weight on that particular foot. Already you can see Nazri being a lot more circumspect, being careful, not wanting to expose that back foot. And if Meghalaya is able to stay in this contest, they're going to take a win. Both these fighters being very circumspect right now, trying to read the play. The first round a lot more faster, but in the second round fatigue begins to seek in.
Nice contact, flush right landing for Assam. And slowly Meghalaya will begin to feel the pressure. And each of these opportunities creating an opening. And overcommitting there. And Nazri being aware. And we've all been very sensitive about any kind of injuries, and also whenever we talk about any kind of bleeding on the platform, officials always want to ensure that A, the players are safe, and B, does not cause any risk of infection to the opponent as well. That's why it's really important to ensure that there is no bleeding. And Wushu a very interesting sport because it also rewards the fighter for impact. So in case you make your opponent unconscious and there is a count and the official wants to give the fighter an opportunity to get back onto his feet, you automatically get 2 points for that. The judges need to keep a close eye on proceedings in competitions like these because there's a lot of pride at stake. Assam 4, Meghalaya 1 in this particular round. And citing injury, the official calling this particular contest to a close. And there we have confirmation. Jiral Nazri for Assam taking that bout. So with this we come to the end of the 52 kg men's Sanda first round fixtures. And very soon we will be moving ahead to the next weight category, waiting for confirmation whether it's going to be the 56 or the 60 kg men. और मणिपुर और त्रिपुरा के मध्य मुकाबला होगा 56 किलो भार वर्ग का ये पुरुषों का ये अगली श्रृंखला का मुकाबला। इससे पहले सर्वप्रथम 48 किलो भार वर्ग में मुकाबले खेले गए। 48 के बाद 52 किलो भार वर्ग में पुरुष 48 के बाद 52 किलो भार वर्ग में मुकाबले खेले गए और अब ये 56 किलो भार वर्ग में मुकाबले। मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर के खिलाड़ी जो कि ये हैं रेड कॉस्ट्यूम में हैं और त्रिपुरा के खिलाड़ी जो कि ब्लू कॉस्ट्यूम में हैं, दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा 56 किलो भार वर्ग का। पहला चक्र जूरी के से अनुमति लेते हुए प्रयासरत एक दूसरे के ऊपर प्रहार क्षमता का प्रयोग करने के लिए। एक अच्छा प्रयास, लेग अटैक किया और यहां पर गिराने में कामयाब। 2 अंक सुनिश्चित उनको प्रदान किए जाएंगे। एक अच्छा प्रयास था, रेफरी द्वारा सावधानी बरतने का भी निर्देश दिया गया कि आप पुशिंग नहीं कर सकते, धकेल नहीं सकते हैं, तो धकेलने से रुके, पुशिंग करने से रुके, ये सावधानी बरतनी होगी जरूर। प्रयास अच्छे यहां पर त्रिपुरा के खिलाड़ी के काटे की बात करें तो वह भी बहुत अच्छी उनकी हाइट एडवांटेज है, लॉन्ग रिच का एडवांटेज है त्रिपुरा के खिलाड़ी के पास जो कि ब्लू साइड के खिलाड़ी हैं। राकेश दास त्रिपुरा, रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें, आपको अटैक करना होगा।
एक अंक और प्रदान किया जाएगा। प्रयास अच्छा, बहुत ही सुंदर हुक और अपरकट का प्रयोग, एक अच्छा प्रयास यहां पर। टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड हुआ उनका। प्रहारक क्षमता काफी अच्छी मणिपुर के खिलाड़ी की, यही एक सोच उनकी। बहुत अच्छा प्रयास, पुनः जो किक का प्रयोग था बहुत ही अच्छा था। 4-1 का स्कोर, बढ़त बनाने में कामयाब यहां पर मणिपुर के खिलाड़ी। एक अच्छी रणनीति, और वो रणनीति पूरी तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं, अंकों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन, जिस प्रकार से उन्होंने ये पुनः सुनिश्चित है उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। एक अच्छा प्रयास था उनका। किक के बाद फिर स्ट्रेट जैब के बाद फिर पुनः किक, और फिर गिराने का प्रयास। लेग होल्ड करने के बाद गिराने का प्रयास था। यहां पर ये 2 अंक और सुनिश्चित है उनको और प्रदान किए जाएंगे। एक अच्छा प्रयास, 7-1 का स्कोर, बढ़त बनाने में कामयाब। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता बहुत अच्छी। यहां पर पुनः गिराने का, क्लिंच करने का प्रयास था। क्लिंच करने के बाद गिराना बहुत जरूरी होता है। 2 सेकंड का खेल समय होता है, समय अवधि जब आप क्लिंच करते हैं। राकेश दास त्रिपुरा के, एक ही अंक है अभी तक उनके पास। प्रयास अच्छा, मगर बहुत ज्यादा यहां पर अपनी ही तकनीक में उलझे। गिराने का प्रयास था, मगर बॉडी वेट संतुलन से बिगड़े, और यहां पर पहला चक्र समाप्त। 7-2 का स्कोर, बढ़त बनाने में कामयाब मणिपुर के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी त्रिपुरा के खिलाड़ी के विरुद्ध। लगातार आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करें जिससे अंकों के अंतराल को कम कर सकता है और अपने विजयश्री के लिए आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो गलतियां उससे हुई हैं उनके बारे में बताते समझाते हैं प्रशिक्षक, और वे किस तरीके से किस टेक्निक का प्रयोग करें जिससे अपने प्रतिद्वंदी के साथ वह खेले और अंक अर्जित करे। तो ये सेकंडिंग जो होते हैं उनकी जो राय होती है 1 मिनट के अंदर, जो रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स करने के बाद उनको बताते समझाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी रणनीति काफ़ी अच्छी कारगर सिद्ध हो। खिलाड़ी अगर उसका अनुपालन करे तो सुनिश्चित है कि वह अपने अंक तालिका में अपने अंकों का परिवर्तन कर सकता है। विपिन, बहुत ज़रूरी यहाँ पर अपने कोच, अपने प्रशिक्षक की राय के अनुरूप खेलना। Absolutely, Sanjeev. Very well spotted, very well said. Sometimes this becomes really important even when the contest is so one-sided. Manipur with Kennedy Singh definitely a lot stronger and superior to Rakesh Das, and we've been seeing that in the first round completely. Rakesh guilty of keeping that guard really low. Spotting back immediately, landing with a flush left hook on the chin. Being a lot more technical in the second round. The first round is a lot more bravado. The second one being a lot more technical. Kennedy chasing Rakesh. Switch in stance, going southpaw. Watch out for the left high kick. Fakes everyone, including us, inside left kick. Low hands by Rakesh, and immediately 2 smooth connects by Kennedy Singh. Technical round 2. Being careful, measuring his energy. This is the sign of a good fighter, knowing that this is just the first round in this 56 kg category, and you know that you're definitely going to win because you've had such a dominant first round. So you want to conserve your energy, play a level or 2 below, so that you can go into the semi-finals with a lot more energy in your belt, and that's exactly what Kennedy Singh is doing. Slow, measured, methodical, and precise. There we see nice flush right, landing smooth on that chin.
the fatigue. Look at the legs wobbling. And when you don't have the strength in your legs, it's difficult to keep control of your upper body. The officials calling a stop to this contest. Just like we said, Salam Kennedy Singh progresses to the next round in the 56 kg category. और यहाँ पर इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो बढ़त बनाने में काफी अच्छे We have an interesting name on the cards in the blue corner, 5-star Bare in blue. He looks like those like. Taking on Assam in red. The official finding that head got a little loose. And always better to be safe than sorry. Nice take there with that left jab. Definitely punch heavy, the fighter from Meghalaya. Leaning in with those punches. And to counter that, the fighter from Assam will have to maintain distance. Flush connect. Sanjeev keeps pointing out only 2 seconds there. Once you get a grip on your opponent, you need to make a move. Either pull him down or release him. Close bout this. Both these fighters not overcommitting. Managing to get both the knees down. That excites the crowd here. Nice contact. Nice connect. Partially blocked with that raised right hand. Kigoyoka. In red. In blue. Ramdin Tara. Nice push kick, flat on the chest, bringing his leg game to this bout. Shuffling out of danger. Nice flush connect on the thigh. When you see a close contest, you see the game becoming a lot more technical. Both these fighters aware of the capabilities of their opponent and not taking anything for granted. And just like we were talking, a very closely, evenly contested round. Neither of these fighters running away with proceedings, 5 points to 2. Definitely this one going in favor of Arunachal. 3-point lead. Probably the most evenly contested
bout we've seen so far in these Wushu championships. That's Mizoram's Ramdeen Tara on your screens, and there in red, Kiko Yoka. So we are bringing these pictures to you from Shillong, Meghalaya. Enjoying the brilliant weather. It's a bit chilly. A perfect time to get a cup of warm tea. But no warm tea for these fighters, needing that rehydration. All set to go again. Ramdeen Tara in blue for Mizoram, taking on Kiko Yoka, Arunachal in red. Watch out for the fast feet from Kigo. Nice connect. That's what we are talking. Look at that lead leg. No hint of any kind of back lift. Immediately raises it. And this time switching it up with that left. Nice pressure there being applied by Ramdeen Tara. And sometimes you just want to make a point. It's not about getting a point, it's about making a point that you cannot be suppressed. You might have taken a 3-point lead in that first round, but I'm right there in this contest. And that's what Ramdeen has done. But has he expended too much energy? That's what we need to watch out. Nice connect. And so far this round in favor of Mizoram. Ramdeen Tara up by 3. Nice comeback there. Seeing that Ramdeen had overcommitted for the offense, pulling him down. Nice push kick. This round is heating up. You can see the speed lower down. Nice pivot there. Frustrated with himself, Ramdeen. He was in a good position, but completely at the wrong time. Being rolled over by his opponent. And that's never a good feeling. It's pretty embarrassing when your opponent gets a complete hold of you and throws you down to the mat. Fight, the call by the official. Ramdeen will have to take the offense. Nice trip there, single leg trip. Nice flush left connect. The gloves coming off a bit, and the official aware of the proceedings. Nice contact soon after the break, realizing that Ramdeen was overcommitting. Kigo Yoka pushing through. And a very close call there. While Ramdeen did manage to take this particular round, the first round lead working in favor of Kigo. First to 12 points, as they say. And Kigo Yoga makes it one more for Arunachal. बिल्कुल कोई दो राय नहीं, बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया। पहले राउंड की अगर हम बात करें तो 5-2 का स्कोर था, दूसरे राउंड की अगर हम बात करें तो 6-7 का स्कोर था। हालांकि एक अंक बढ़त बनाई थी, मिजोरम के खिलाड़ी ने कोशिश करी थी, मगर यहाँ पर बहुत ही सुंदर खेल का परिचय बाहर गिराने में कामयाब हुए थे। 2 बार उन्होंने एक राउंड में ही 2 बार बाहर गिराया, जिस वजह से वह विजयी हुए, उस राउंड के विजेता हुए, तो विजेता घोषित किए। तो यहाँ पर खेल कौशल बहुत अच्छा,
और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो सिक्किम और नागालैंड के खिलाड़ी का मध्य मुकाबला होगा। सिक्किम के खिलाड़ी की अगर हम इस खिलाड़ी की बात करें तो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और स्टेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं पूरा ताशी। और वहीं नागालैंड के खिलाड़ी जो कि ब्लू साइड में हैं, नीली पोशाक में हैं, स्टेट चैंपियन प्रतियोगिताओं के वह स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। वेशभूषा का पुनः निरीक्षण करती हुई रेफरी, नैतिक जिम्मेदारी होती है रेफरी की वेशभूषा का निरीक्षण करना। और ये मुकाबला पहला चक्र प्रारंभ, सिक्किम और नागालैंड के मध्य चलता है ये मुकाबला। मैट के मध्य लाकर मुकाबला पहला राउंड, समय अवधि 2 मिनट। प्रयास करने का कोशिश अच्छी थी, नीचे झुककर बैंड होकर गिराना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, दोनों डबल लेग अटैक करना चाहते थे मगर डबल लेग अटैक कर पाने में कामयाब नहीं हुए। यहाँ पर नागालैंड के खिलाड़ी गार्ड पूरा, शेल गार्ड पूरा अपना छोड़ दिया है जिसकी वजह से उनको नुकसान होगा। यहाँ बाहर गिराने में कामयाब हुए हैं, बाहर धकेलने में कामयाब हुए यहाँ पर सिक्किम के खिलाड़ी। प्रयास अच्छे, चुस्ती दुरुस्ती काफी अच्छी दिखती हुई, मगर सूझबूझ की अगर हम बात करें तो सिक्किम के खिलाड़ी बहुत ही धैर्यता के साथ अपने प्रतिद्वंदी को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही वह नजदीक आते हैं तो काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए काउंटर अटैक की गेम खेलना, बहुत ही सुंदर, गिराने में कामयाब। प्रतिद्वंदी की वही काउंटर अटैक, जैसे ही प्रतिद्वंदी नागालैंड के खिलाड़ी ने प्रयासरत हुए वहीं पर उनकी टांग को पकड़कर गिराने में कामयाब हुए सिक्किम के खिलाड़ी। तो ये काउंटर अटैक की जो उनकी रणनीति है ये काफी कारगर सिद्ध हो रही है उनके लिए। 2-1 का स्कोर। एक अच्छी बढ़त बनाने की कोशिश सिक्किम के खिलाड़ी की, प्रयास अच्छे, काउंटर अटैक की गेम बहुत अच्छी, फुटवर्क बहुत अच्छा, पूरी तरह से मैट के चारों तरफ अपने हाथों पैरों का तालमेल जो उन्होंने बना रखा है बहुत अच्छा बना रखा है। वो तालमेल उनको कारगर सिद्ध कर रहा है। बॉडी वेट ट्रांसफर कर रहे हैं 40-60 का, तो 60-40 का जो बॉडी वेट उन्होंने ट्रांसफर किया हुआ दोनों लेग्स पर, वो काफी अच्छा और पूरी तरह से बैंड होते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करने के बाद अपने बॉडी वेट को ट्रांसफर करते हैं एक लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लेग पर और फिर उसके बाद बॉडी वेट को ट्रांसफर करने के बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करके फिर प्रहारक क्षमता अपनी दिखाते हैं, तो लेग अटैक करते हैं। प्रहारक क्षमता काफी अच्छी, किकिंग उनकी बहुत अच्छी है। एक अंक सुनिश्चित, एक और उनको प्रदान किया जाएगा। 3-1 का स्कोर सिक्किम के खिलाड़ी का। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो 80 मीटर ऊंचा ये प्लेटफॉर्म होता है, हाइट जो है, और 8 मीटर 8x8 का ये प्लेटफॉर्म, 8x8 मीटर का ये प्लेटफॉर्म, 5 सेंटीमीटर की जो येलो लाइन आप देख रहे हैं और नीचे का जो येलो पैक का हिस्सा है वह 2 मीटर का होता है जो प्रोटेक्टिव एरिया माना जाता है। जहां पर पहला चक्र समाप्त हुआ है, बढ़त बनाने में कामयाब। 3-2 का स्कोर सिक्किम के खिलाड़ी ने बढ़त बनाई हुई है अपने प्रतिद्वंदी नागालैंड के खिलाड़ी के विरुद्ध। अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए 1 मिनट का अंतराल देखना होगा। यहाँ पर जो सिक्किम के खिलाड़ी ने बढ़त बनाई है वह अगले दूसरे चक्र में उस बढ़त को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। या नागालैंड के खिलाड़ी 1 अंक का अंतराल था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बढ़त को कम भी किया जा सकता है, बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर यह देखना होगा कि अब सिक्किम का खिलाड़ी उस बढ़त को किस तरीके से बरकरार रखेगा। और नागालैंड का खिलाड़ी यहाँ पर मंत्रणा करते हुए जूरी टेबल पर, जजेस और जूरीज के बीच में हेड जज जो है वह मंत्रणा कर रहे हैं जूरी ऑफ अपील के पास। और ये दर्शकों से भरा हुआ ये खेल प्रांगण इन रोमांचकारी मुकाबलों का आनंद उठा रहे हैं। नेहरू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स 56 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। It's been a very close and cagey affair between these two fighters. At the end of the first round, a very low scoring bout. Sikkim 3, Nagaland 2.
That tells you both these fighters respect each other's capabilities a lot. And neither one of them wants to overcommit and risk of committing too much in an offense. And when it's such a close round, it's difficult to call for the officials as well. Like Sanjeev points out, all the 5 judges being summoned to the table to discuss and figure out who they should award this particular round to. And this is very crucial considering both these fighters have very little to separate. Men's Wushu Sanda, which is the combat version of Wushu. We are watching the last bout in the 56 kg category. Well, all has been understood and the fighters are back on the platform. The official having a quick word with Furayashi Sherpa. There's the signal, it's round 2. Let's see how this pans out. Once again, both of them respectful of each other, giving each other enough space, being wary. But definitely when it comes to control of the platform, Furatashi Sherpa has been pressurizing Chishi continuously. Once again, no stopping Furatashi. Pressurizing Itokui Chishi. But Chishi is a good counter puncher as well. Might get cornered, but then able to sidestep and shuffle away. And sometimes the coaches come with a strategy that when you're on your feet, you're definitely stronger than your opponent, and perhaps that's what Sikkim is trying to leverage. Furatashi there. Like we said, moving him into a corner, pressurizing him, and then counter-attacking his way out of trouble is Chishi. This is another really close round. This time it's Tashi who's in the lead. 3-1 up by 2. Make that call. Relentless pressure makes you tired. That's what we're beginning to see with Chishi. The movement's a lot more slower. And sometimes when you're on the offense, it takes out the leg game of your opponent. Because they're always shuffling backwards. It's difficult for them, and that's the kind of error that creeps in when there is relentless pressure. Furatashi now. Pulling Chishi down to the turf. And the bout awarded to Chishi. Chishi from Nagaland taking that victory.
Meghalaya mesti. Meghalaya. Jumlah mak. Aku pun nak tiap bas lah. Mana? Lu lawan dak keluar sih. Baik kita nak bas nak. Mairo. Yukiwan kita. Yawan hina dak kali jumlah. Well, the weight categories are coming in thick and fast. We started with 48, moved to 52, 56, and now we're beginning to get into the business end of Wushu. And as the weight categories increase, the impact of each and every punch and kick will be felt. Now we're beginning to talk about serious knockout power when we're talking about 60 kgs. First bout is featuring a home star in blue. Meghalaya will be represented by Shorminku Momin. And in red, his opponent from Nagaland, Inchin. Easy to spot there. Inchin from Nagaland. Meghalaya di orang Saudi. Sao. Nagaland kan ni. Nice work there done. Nagaland registering the first points there. Both these fighters sizing each other up in this first round, figuring out what they need to do. Sweeping leg kick, no contact. Nice shuffle on the inside. He had the opportunity for the right, but decided to pull his punch back a bit. And sometimes when you get that close, you don't need to be too worried about the takedown. Go with that right flush. Inchin with a slender 1-point lead. Make that 3. That 2 points high kick making all the difference. Shuffling in and out, both these fighters. Powerful lift there. Sweeping him off his feet. Nice calf kick. Immediately, not letting him settle with that lead leg. You have to be really careful with your stance. Your stance is a little too wide. If you put your foot a little too far forward, in comes a calf kick, and that calf kick is 1 point in your opponent's kitty. 8-2 dominant performance by Nagaland. First round comes to an end, and definitely blue corner will be a lot more happier with proceedings. Red corner definitely needs a lot more talking to. Meghalaya there. Choringkum Monin. And sometimes it's a matter of confidence as well. And to take nothing away from Team Nagaland, they know they're up by 6, they're in a comfortable position. They definitely seem to be a more dominant team and dominant fighter in this particular bout. Still wanting to keep that momentum. And when it comes to fighting contests, it's all about momentum. It's not necessarily just about this bout. As a fighter, you know if you want to take gold, you need to win 4 consecutive fights. The first round, the quarters, the semis, and the finals. So momentum important, and equally important is the confidence of a fighter. Eight to 6 point lead.
Watch out for that right foot offense as he shuffles in and out. Sanjeev, very dominant performance so far in this particular bout. Nagaland has been unstoppable. Comfortable 6 points in the first particular round, and in this one with a nice opening. और ये बात समझी जा सकती है नागालैंड के खिलाड़ी की जो कि अपनी स्टेट प्रतियोगिताओं के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, ना राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो राष्ट्रीय और राज्य प्रतियोगिताओं का उनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है और वो अनुभव यहाँ पर साफ दिखता हुआ नागालैंड के खिलाड़ी का तो बढ़त अच्छी है। यहाँ पे मेघालय के खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की, 2-2 का स्कोर है अभी तक और पहले चक्र की अगर हम बात करें तो पहले राउंड में 8-2 का स्कोर रहा था, मतलब कि 8 अंकों के साथ बढ़त बनाने में कामयाब हुए थे नागालैंड के खिलाड़ी। तो यहाँ पर 4-2 का स्कोर, मतलब 4 अंकों के साथ बढ़त बनाई हुई है अभी तक, 2 अंकों का अंतराल है अभी तक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक नपातुला खेल खेल रहे हैं नागालैंड के खिलाड़ी, कोई छटपटाट नहीं है। जैसी प्रतिद्वंदी के नजदीक आते हैं, यहाँ पर रिवर्स किक का प्रयोग करना चाहा था मेघालय के खिलाड़ी ने, मगर उस प्रयास को पूरी तरह से अंकों में परिवर्तित कर पाए यह नहीं हो पाया। मगर यहाँ पर नागालैंड के खिलाड़ी ने प्रत्युत्तर दिया, प्रत्युत्तर बहुत अच्छा। तो यहाँ पर प्रत्युत्तर बहुत अच्छा दिया, कोशिश अच्छी थी टांग के लेग अटैक करने की, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा देख रहे हैं, प्रयास अच्छा है, अपने प्रतिद्वंदी की रणनीति को पूरी तरह से समझकर फिर प्रहार क्षमता दिखाते हैं। यहाँ पर 2 अंक और उनको सुनिश्चित है, तो ये बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन उनका, 9-2 का स्कोर हो गया है, तो बढ़त बनाने में कामयाब है। अभी तक पूरे दोनों राउंडों की अगर हम बात करें तो पहला चक्र उन्होंने अपने पक्ष में किया था, दूसरा राउंड यहाँ पर उन्होंने अपने पक्ष में किया, तो दोनों राउंड वह जीत गए हैं। तो इसलिए अब तीसरा राउंड नहीं होगा। अंकों के आधार पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए हैं नागालैंड के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी मेघालय के खिलाड़ी के विरुद्ध। तो पहला राउंड उन्होंने जो जीता था 8-2 का स्कोर था, दूसरे राउंड में 9-4, तो तीसरे राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 में से कोई 2 राउंड आपके पक्ष में होने चाहिए तो आप विजयी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों राउंड उन्होंने अपने पक्ष में किए और इस मुकाबले को बड़ी सहजता के साथ, बहुत ही उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने पक्ष में किया। Bunutan Manipur ya, right? Assam lah. That's a confirmation that the next bout is lined up. 60 kg men, second bout between Manipur and Arunachal. Like we've seen any bout which has featured anyone from Arunachal, it's been exciting times. And this crowd will be looking forward to what Ripakso Chikro can do in this bout. But let's not underestimate Brijesh Singh. So it's going to be Hassan against Ripakso. Manipur against Arunachal. Both these fighters respecting each other, no one rushing into a punch or an offense. It's always a good sign to see when both the fighters are respectful of each other. It usually means they know each other's game, and they also know that don't overcome it initially, because that's when your opponent is in peak state. The crowd getting excited, knowing that this is going to be a good fight.
Like this angle from the back, you can see exactly what the red fighter will be looking at. Will be looking at that movement, will be looking for that opportunity for that straight leg. Manipur coming back into this contest, not letting Arunachal run away with it. 3 points to 4. Both these fighters being very careful with their body positioning, not wanting to give any open looks to their opponents. You can see how their defensive stances in position, wanting to protect themselves from any kind of offense, both the leg attacks and the arm attacks. You see right flush connect, good release there. Right cross landing flush on the chin. Brilliant roundhouse kick there. Thudding into the guard. Like we said, close contest, 5 points each. And that roundhouse kick giving him that extra 2 points as we come to the end of that first round. Bijesh Singh will be happy with his performance. And right at the end of that round, taking that 2 differentiating points. Arunachal Ripakso Chiro will be happy with what he's been able to do. He's very much in the contest. Both these fighters have been equal in every department. Just before the round's end, we saw a nice kick right thudding into the guard. And that gave those 2 points that separate these two fighters. Sanjeev, a good fight for us to call. बिल्कुल विपिन, एक अच्छे खेल का कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है और समझी जा सकती है ये बात। मणिपुर के खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो चपलता, चुस्ती, दुस्ती काफ़ी अच्छी है, टेक्निक उनके पास काफ़ी अच्छी है। वो जो टेक्निक है वो उनको अग्रसर कर रही है जीत की ओर। यहाँ पर देखना होगा, पूरा अपना रेस्ट टाइम लेते हैं, रेस्ट टाइम लेने के बाद अपने प्रतिद्वंदी को पूरा मौका दे रहे हैं। जैसे ही उन पर अटैक करने प्रतिद्वंदी आता है तो काउंटर अटैक की गेम कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जितने भी खिलाड़ियों का मैंने देखा है खेल कौशल, काउंटर अटैक की जो भी खिलाड़ी गेम खेल रहा है फर्स्ट अटैक करने का प्रयास जरूर करते हैं, मगर काउंटर अटैक जो है वो बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर समझी जा सकती है ये चीज़ कि काउंटर अटैक की गेम खिलाड़ियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये प्रयास जो किया, अपने आप को स्टेप बैक किया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने स्टेप बैक करने के बाद फिर आगे आए, प्रतिद्वंदी की जैसे ही लेग अटैक हुआ तब उन्होंने प्रहार किया। तो ये एक उनकी काउंटर अटैक की जो गेम है, प्रतिद्वंदी जो लेग अटैक कर रहा है उसकी हवा में लात है और वहां पर उसकी फोर्स को पूरी तरह से 50% फोर्स उसकी हवा में है और उसको वहां पर उस फोर्स को तोड़ दिया, मतलब पकड़ कर अपनी तरफ खींचा तो उसकी 100% फोर्स को नाकामयाब कर दिया। तो ये एक टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं समझता हूँ। 2-0 का स्कोर पहले चक्र की अगर हम बात करें तो 7-5 का स्कोर था, मगर अब यहाँ पर प्रयास ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रयास था, यहाँ पर गिरा पाने में कामयाब हुए। थोड़ा सा संतुलन जरूर बिगड़ा, रेफरी के ऊपर आके गिरे थे। रेफरी को साइड स्टेप लेना चाहिए था, रेफरी कभी भी पीछे की ओर प्लेयर के नहीं जाता है। तो ये एक रेफरी की भी थोड़ी सी चूक है, मगर हाँ इतनी तेजी से खेल जो चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही फास्ट गेम है ये और इतनी तेजी से पलक झपकते ही टेक्निक का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है। तकनीकी योग्यता बहुत अच्छी है खिलाड़ियों की, क्योंकि समझी जा सकती है ओलंपिक जैसा एक ये खेल कौशल है, ऐसा खेल प्रांगण प्लेटफॉर्म है जहां पर उत्कृष्ट खिलाड़ी जो अपने राज्य का पदक विजेता है, स्वर्ण पदक विजेता है, वही यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर। और यहाँ पर ये बहुत अच्छी टेक्निक अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी की, गिराने में कामयाब हुए। 2 अंक सुनिश्चित है उनको और मिलेंगे, तो यहाँ पर 1 अंक प्रदान किया गया है उनको, तो 4-3 का स्कोर है। उस बढ़त को जो मणिपुर के खिलाड़ी ने बनाई है, उस बढ़त को कम करने की कोशिश अरुणाचल के खिलाड़ी की। बाहर गिराते हैं तो यहाँ पर सुनिश्चित है अंक दिया जाएगा, मगर यहाँ पर
पुशिंग था मगर वापस हुआ, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, उससे पहले उन्होंने स्टॉप कर दिया था। तो पुनः वही गलती, गिराने में कामयाब मणिपुर के खिलाड़ी। प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं, अपने अंकों में परिवर्तित कर रहे हैं। अच्छे कुशल खिलाड़ी का यही एक मूल्यांकन है कि वह जो प्रयास करे उस प्रयास को विफल ना जाने दे, अंक में परिवर्तित करे। तो ये एक अच्छे कुशल खिलाड़ी की योग्यता। भ्रमित करने की कोशिश, यहाँ पर पेंट अटैक करने का प्रयास, मगर अपने ही अटैक में उलझे। बार बार प्रयासरत, और यहाँ पर इस चक्र की समाप्ति के साथ ही यहाँ पर देखना होगा तीसरे राउंड तक जाएगा ये मुकाबला, सुनिश्चित है। मंत्रणा करते हुए रेफरी और जूरी। मुकाबला यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, राउंड समाप्त हुआ है। तो पहला राउंड जो था 7-3 का रहा। दूसरा राउंड में अंकों की अगर हम बात करें तो बढ़त बनाने में कामयाब थे मणिपुर के खिलाड़ी। तो यहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ी कामयाब थे, तो इसीलिए ये तीसरे राउंड तक जाएगा, क्योंकि पहला राउंड मणिपुर ने जीता, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने जीता। तो अरुणाचल और मणिपुर दोनों एक एक राउंड जीत चुके हैं। तो तीसरा और अंतिम चक्र निर्णायक चक्र होगा, करो या मरो वाली स्थिति होगी दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। यहाँ पर जो भी विजेता बनना चाहता है वो इस राउंड का जो विजेता होगा वही इस मुकाबले का विजेता होगा, यानी कि तीसरे और अंतिम राउंड का विजेता ही सुनिश्चित करेगा कि इस मुकाबले को कौन जीतता है। 60 किलो भार वर्ग का ये तीसरा और अंतिम चक्र। As Sanjeev pointed out, this is the first time you're moving into the third round in these Wushu championships, and it's taken us 3 weight classes to get there. 60 kg weight class, and very little to separate these two young men. Both of them bringing their A-game to this third round. Cancelling each other out, taking each other to the floor. And the counter-attacking style of Manipur being challenged by the offense from Arunachal. And he's going to have to do something that he's not done throughout this bout. Bijesh Singh will have to attack more. And he's been gaining all his points counter-attacking. Manipur in the lead. Watch out for that shuffle, watch out for that fake. And that's what Arunachal will be trying to do, will be trying to go for double points or pushing out their opponents. Because when it comes to play on the platform, somehow Manipur seem to have a good edge on proceedings. Watch out for that throw. Nice flush push kick there. Landing clean. This time countering really well. Rolling him off his back. Like they say, when the going gets tough, the tough get going. Manipur taking their game to the next level. And once again, getting hold of that arm, positioning his shoulder underneath his opponent, and then that judo roll follows. Manipur now comfortably holding on to a 3-point lead. But wait, things are not over. Here comes Arunachal, pulling down Bijesh to the floor. A nice flush kick. Will that count? We'll have to wait and see. This is crucial.
The third and final round comes to an end. And when it comes to this third round, Manipur winning this 5-4. Sanjeev, what an exciting game we've had. बिल्कुल बहुत ही उत्कृष्ट खेल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले चक्र में 7-5 था, दूसरे में 4-6 था, 5-4, यानी कि एक अंक अगर यानी कि कुछ सेकंड और बचते तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का खिलाड़ी इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर सकता था। मगर संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। कह सकते हैं दोनों ही खिलाड़ियों का खेल कौशल तो था, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि यहाँ पर प्रतीक्षा विजयी कौन होता है, अंकों के आधार पर मंत्रणा की जा रही है। पांचों जजेस को बुलाया गया है, जूरी ने, हेड जज ने अपने पास, अपने सम्मुख। यहाँ पर कुछ त्रुटि हो सकती है, देखना होगा स्कोर पूरी तरह से दिया गया है या नहीं। तो ये मंत्रणा करना, किसी भी खिलाड़ी का नुकसान ना हो, यह देखना बहुत जरूरी होता है। जूरी की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जजेस द्वारा जो अंक प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंक किसी की फेवर में आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया समय सीमा में रहते हुए। तो यहाँ पर मंत्रणा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। जो विजेता है वो विजिबल है, सर्वसम्मति से निर्णय। और यहाँ पर मंत्रणा करते हुए कहीं किसी पॉइंट की कोई कमी रही है जिस वजह से हेड जज थोड़े से असंतुष्ट दिख रहे हैं, जो स्कोर दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं जजेस द्वारा, तो असंतुष्ट हैं। और उस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अरुणाचल प्रदेश का खिलाड़ी शायद जीत रहा हो और उसको अंक समय सीमा पर रहते हुए नहीं दिया गया, प्रदान किया गया, जिस वजह से उनको यहाँ पर विजयी ना किया जाए। मगर जजेस का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, डिसीजन कैन नॉट बी चेंज। नहीं हुआ तो अभी तक। मुकाबला भी रोका गया है, मंत्रणा चलती हुई। हेड जज और असिस्टेंट जज मंत्रणा कर रहे हैं जजेस के साथ। 5 जजेस जो कि मूल्यांकन करते हैं, निर्णायक जो कि 5 निर्णायक, पांचों एंगल से। यहाँ पर हम एक साइड से देख रहे हैं विभिन्न, मगर जो जजेस हैं वो उस मुकाबले को हर एक कोने से देखते हैं। वो बहुत नज़दीकी से इस मुकाबले को देखते हैं और बहुत नज़दीकी से देखने पर ही अंक प्रदान करते हैं। तो हम एक साइड से देख रहे हैं, मगर यहाँ पर मूल्यांकन पांचों जजेस का सर्वमान्य होना चाहिए। तो वो जो स्कोर आता है उससे राउंड का विजेता, हर राउंड का विजेता होता है, यानी कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड कौन विजयी हुआ, यह देखना होता है। और यहाँ पर डिसीजन हो चुका है, देखना होगा विजयश्री किसको प्राप्त होती है, क्योंकि जूरी का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। और यहाँ पर मणिपुर के खिलाड़ी को विजयी घोषित किया गया। 7-5 पहले चक्र में, 4-6 दूसरे राउंड में रहा, मगर तीसरे और अंतिम राउंड में 5-4 का स्कोर रहा, यानी कि 2 राउंड, पहला और तीसरा राउंड अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हुए और इस मुकाबले को उन्होंने जीता है अपने प्रतिद्वंदी अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी के विरुद्ध। What an exciting moment it is, and that's the outpouring of the emotion. And as we enjoyed the excitement bringing these pictures to you, imagine the joy on this player's heart and mind. All these years of hard work, and here in these Northeast Olympics, taking that crucial victory was Manipur's Vijesh Singh. So we are getting all set for the next bout in the 60 kg men category. Watch out for Mizoram and Assam. Pramod Ray representing Assam taking on Mizoram's Pokun Shaima. Assam there on blue, 60 kg mark. That's the kind of concentration you require before you get onto the platform. And
The players and the crowd really enjoying action here. It's post-sunset here in Shillong. It's beginning to get a little nippy in the air. But no one leaving this stadium. Difficult to find an empty seat. And that's the beauty of combat sport. It's always invigorating, always exciting, always keeping people involved. Confirmation there, Pramod Ray from Assam taking on Paukun Shaima. So we are at the 60 kg category, and in this category you begin to see that knockout power that a kick or a punch might have, because there's enough body weight behind these strikes. And as these guys get stronger, as we get into the more heavier categories, the officials' role becomes a lot more crucial. You need to be in a position to stop the fight in time in case there is a concussion on the platform. And officiating this fixture between Mizoram and Assam, between Paukun Saima and Pramod Ray. Assam in blue, Mizoram in red. Get ready for some action. Right, both these fighters touching their gloves, getting all set, and immediately landing flush there. Yes, you get that leg kick in, but I'll not let you stand on your feet, pulling the fighter down, giving a point and taking two. Look at that aggression, nice. Looping right hand, connecting flush. Good action here in this particular bout. Increased tempo. We've had a few kg contests the last couple of fights, but this one, seeing both of these fighters engage a lot more. Going for the pull. The official liking both the efforts, therefore not having a point. But on this occasion, the fighter in red, Mizoram taking 2 points into their kitty. Four points all. Look at this low hands from Mizoram. A little surprising. It remains to be seen if Assam can cash in on that. Sometimes when you go with such low hands, not protecting the head, a flush leg kick or a shin connect can send you into orbit. That's exactly what I was talking about. Seeing that gap there, going for that high leg kick. Both these fighters now beginning to tire towards the end of this first round. 7-4, Assam in the lead. Pramod Ray. Fighters will have to be careful, just beyond the safety there, the cushioning in yellow. It's a 2-meter wide cushion surface to keep you safe. Anything beyond that is hard concrete, so you need to be careful. And look at the exhaustion levels. What an exciting first round we're having. Looping right hand, connecting on the second occasion. This time, presence of mind, being sharp enough, was off the platform, but managed to grab hold of those gloves and pull his opponent with him.
Once again, even. But it's not necessarily about getting the points, it's also about tiring your opponent down. And you can see both these men are really exhausted, especially the fighter from Mizoram. And the first round comes to an end. Assam takes it by 3. 7-4. Assam in the lead. Look at that exhaustion. Lot more composed Pramod Ray for Assam. It remains to be seen if Baukan Saima can dig out something, can bring out some energy, can bring out something into this contest. Can he claw his way back? 3-point lead. Good, exciting first round, Sanjeev. It was really interesting and nice 3-point cushion for Assam. बिल्कुल असम के खिलाड़ी जो है फर्स्ट अटैक कर रहे हैं। फर्स्ट अटैक करने के बाद हालांकि थोड़ा सा संतुलन जरूर उनका बिगड़ा था, मगर 2 बार बाहर गिराने में कामयाब हुए थे। यद्यपि वह स्वयं भी बाहर ना जाते, संतुलन बना के रखते, तो सुनिश्चित था वो राउंड पूरी तरह से उनके पक्ष में होता। मगर अंकों की अगर हम बात करें तो अंकों में भी अभी उन्होंने बढ़त बना रखी है। पहले राउंड में 7-4 का स्कोर है, और अगर 2 बार वो वैसे गिरा के बाहर स्वयं भी ना जाते तो वो पूरी तरह से मुकाबले को अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब होते। तो रणनीति बहुत अच्छी है, सोच समझ उनकी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा उनको और अपनी टेक्निक पर सुधार करना होगा। थोड़ी सी मामूली सी कमी है कि वह उसको संजो के रखें और स्वयं भी बाहर ना जाएं। तो और ये मुकाबला दूसरा राउंड शुरू हो गया है। लेग अटैक उनका बहुत अच्छा है। जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आता है उसकी फोर्स को तोड़ते हैं, नीचे होते हैं और पूरी तरह से दोनों टांगों को पकड़ते हैं। तो ये उनका जो प्रयास है बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बाहर गिराने में कामयाब हुए, मगर स्वयं भी बाहर चले गए। तो ये उनके लिए नुकसान। 1 अंक जरूर मिला मिजोरम के खिलाड़ी को असम के विरुद्ध। असम के खिलाड़ी को मिला है क्योंकि गिरा पाने में बाहर धकेलने का प्रयास उनका अच्छा था। येलो जोन से बाहर की ओर लेके गए थे, लाइन की ओर, प्रोडक्शन एरिया पे लेके गए, गिराया, पकड़ रहे हैं। जब आप क्लिंच करते हैं तो 2 सेकंड की समय अवधि होती है। 2 सेकंड के अंदर आपको अपनी टेक्निक पर अप्लाई करना होता है। जबकि अगर आप उस टेक्निक पर अप्लाई नहीं करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह भी होगा। आपके प्रतिद्वंदी को उसके अंक दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉप का निर्देश। चोटग्रस्त हुए हैं, यहाँ पर मसल क्रैम्प्स आया है उनके पैर में, थाई में। 1-1 अंक दोनों ही खिलाड़ियों के पास है। यहाँ पर गमशील्ड मुंह से बाहर गिराई, चोटग्रस्त हैं। यहाँ पर मसल उनकी क्रैम्प्स हैं, क्रैम्प्स पड़े हैं। जो खिंचाव आ गया है मांसपेशियों में वह दुरुस्त करते हुए यहाँ पर डॉक्टर्स को कॉल की जाए या नहीं, यह देखेगा। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है यह देखना। और अब ये मुकाबला चलता हुआ राउंड 2 है। पहले राउंड की अगर हम बात करें तो 4-7 का स्कोर रहा। 7 अंकों के साथ बढ़त बनाने में कामयाब थे असम के खिलाड़ी। प्रमोद राय पुनः बाहर गिराने में कामयाब, मगर स्वयं भी बाहर गए। तकनीक अच्छी है, मगर उस तकनीक को सही तरीके से अप्लाई करना यह भी बहुत जरूरी होता है। प्रयास लगातार, प्रयासरत, बहुत ही सुंदर तरीके से। अच्छा प्रहार क्षमता, पंचों का बहुत अच्छा प्रहार। यहां पर बाहर गए तो यह फायदा रहेगा मिजोरम के खिलाड़ी के पक्ष में। 2-2 का स्कोर है अभी तक। प्रहार क्षमता, पुनः पंच का अटैक, पंच अटैक के साथ यहां पर धरातल पर गिराने में कामयाब, मैट पर गिराने में कामयाब। समरसोल्ट लगाने का प्रयास था, मगर समरसोल्ट नहीं लगी है। मगर विपिन, ये जो खेल है ये पूरी मार्शल आर्ट जो कि जूडो, ताइक्वांडो, कराटे और जिम्नास्ट भी, ये सारा मिला जुला निश्चित रूप है चाइनीज आर्ट है। और वो जो सारी आर्ट को मिलाकर जो ये बनाया गया, कमबैक बनाया गया, अपने आप में काबिल तारीफ है। सभी गेमें देखने को मिलेंगी आपको इसमें। मुक्केबाजी भी देखने को मिलेगी, किक बॉक्सिंग भी देखने को मिलेगी, और ये कुंफू तो है ही। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको सभी गेमों की महारत है। तो उसका निचोड़ हम कह सकते हैं इस खेल में देखने को मिलता है।
गिरा पाने में कामयाब। 7-5 का स्कोर। पल प्रतिपल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है उसी के साथ अंकों में भी वृद्धि बनाने में कामयाब हैं यहां पर। तो दूसरा चक्र भी अभी तक अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हैं असम के खिलाड़ी। देखना होगा विसल के संकेत के साथ ये मुकाबला भी वो जीत गए हैं जहां तक मैं समझता हूं। रेफरी को बुलाया गया है, विसल का संकेत था, समय सीमा समाप्त हुई। समय सीमा समाप्त होने के साथ ही जो 6-7 का स्कोर है, यानी कि पहला चक्र जो था 4-7 से जीता था, दूसरा चक्र 6-7। तो यहां पर जो बढ़त बनाई थी तीसरे चक्र की आवश्यकता ही नहीं है और ये मुकाबला असम ने अपने प्रतिद्वंदी मिजोरम के खिलाड़ी के विरुद्ध जीता और एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया। Nice head attack. And then realizing that the player was defensive, going for that takedown. So it's the last contest. We've had some exciting fights in the 60 kg category, and this one sums it up. Tripura taking on Sikkim. In the red corner for Tripura, Bijoy Bhattacharya on your screen. And from Sikkim, Shom Bahadur Tamang. So Shom running away to a 4-point lead. Let's make that 6, 8 points to 2. And not allowing Bijoy Bhattacharya to settle at all. And here comes the revenge from Bijoy. Bijoy says, if you can get me on the platform, I'll get you from outside. The first round comes to an end. Sikkim 10, Tripura 4. And Bijoy Bhattacharya definitely needs to feel more involved in this contest. Shom Bahadur has come out of the blocks with a sprint and just not allowing Bijoy to settle at all. Now you can see the difference between these two fighters as well. Shom Bahadur choosing not to even take a seat, wanting to keep that blood rushing through his legs. Sometimes when you sit on the chair, some fighters don't like that because it might make your legs a little heavy with the lactic acid. So we are back here, round 2.
of fans. Bijoy trying to make a dent here. Som Bahadur, calf kick and out. In and out now. Knows that he's in the lead. Knows that he's also the dominant fighter. And immediately spotting some lethargy by Bijoy and taking him off his feet. Won't be surprised if this fight gets stopped with that 12-point difference that we keep talking about. Going for a head kick there. And the official breaking up that clinch. Som Bahadur, Tamang, Sanjeev, very effective and a very dominant performance in both these rounds. बिल्कुल बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बैक साल्टो जिसे हम कहते हैं लगाया। बहुत ही एक अच्छा प्रहार क्षमता। यहाँ पर आपको यह देखना होता है कि आप जब फोर्स को जनरेट कर रहे हैं, ये देखिएगा पूरी तरह से थ्रो किया, शोल्डर से लिया, शोल्डर पे लेने के बाद सुनिश्चित कर लिया था कि वे किस तरीके से गिराएंगे पीछे की ओर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऐसे तरीके का खेल कौशल का प्रदर्शन एक उत्कृष्ट खिलाड़ी ही कर सकता है, क्योंकि आप ताकत का प्रयोग तो कर रहे हैं मगर बॉडी वेट को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं अपने दोनों लेग्स पर। 40-60 का वेट ट्रांसफर किया, पीछे की लेग पे 60 किलो था, आपने जब लिफ्ट किया तो वजन पीछे लिया और कमर आपकी पीछे ना चटक जाए, पूरी तरह से वजन को फिर आगे थ्रो किया अपने। ये टेक्निक अपने आप में काबिल तारीफ होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करके फिर पीछे घेरना अपने आप में काबिल तारीफ। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी ही ऐसे खेल कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 8-0, कोई अंक अर्जित नहीं करने दिया है अभी तक त्रिपुरा के खिलाड़ी को। और ये बात समझी जा सकती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का काफी अच्छा अनुभव है सिक्किम के खिलाड़ी के पास। स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं अपने स्टेट चैंपियनशिप के राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, उन्होंने रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर एक जो उनका खेल कौशल है वो साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और वो खेल कौशल यहाँ पर दिखता हुआ। और एक तरफा तक किया, इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया, दूसरे राउंड में जाते ही इस मुकाबले को अपने पक्ष में कर समाप्त किया। बिल्कुल। और अगर हम बात करें अब अगले मुकाबलों की बात करें विपिन, अगला मुकाबला भार वर्ग जो है वो 65 किलो भार वर्ग है। इसमें आपको शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। छोटे भार वर्ग में स्पीड वर्क था, मगर बड़े भार वर्ग में जैसे जैसे भार वर्ग बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ताकत का प्रदर्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। डिफेंस में गेम ज्यादा जाएगी, ताकत ज्यादा देखने को मिलेगी। फुटवर्क बेशक से कम जरूर दिखेगा क्योंकि भारी वजन वर्ग है। मूवमेंट करने में इन खिलाड़ियों को थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ रुकावट दिखती है, मगर चुस्ती दुरुस्ती इस खेल में काबिले तारीफ है। फिटनेस, इंडोरेंस वर्कआउट अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों का बहुत ऊपर है, मनोबल काफी अच्छा है। 60 किलो भार वर्ग का, पुरुष भार वर्ग का मेघालय और मिजोरम के मध्य ये पहला मुकाबला। मिजोरम के खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और स्टेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं। रेफरी द्वारा वेशभूषा का मूल्यांकन करते हुए उनकी जूरी से अनुमति लेकर पहला चक्र 65 किलो भार वर्ग, भारी वजन वर्ग, टाइम कीपर से अनुमति। और यहां पर जूरी जब तक सुनिश्चित नहीं करती है तब तक मुकाबले को प्रारंभ नहीं कराया जाता और जूरी की अनुमति के बाद मुकाबला प्रारंभ। स्टेट जैब के साथ थोड़ा सा छटपटाट यहां पर मेघालय के खिलाड़ी की। बॉडी वेट को अपना पकड़ना बहुत जरूरी है और यहां पर 2 अंक सुनिश्चित उनको प्रदान किए जाएंगे। गिरा पाने में कामयाब हुए, 1 अंक दिया गया है। मैट से बाहर चले गए थे, यदि मैट के अंदर गिराया होता तो 2 अंक थे। यहां पर बहुत ही अच्छा एक कार्यकुशलता, 2 अंक, 1 अंक और अर्जित किया। तकनीक बहुत अच्छी। कमर से नीचे लेग अटैक होता है तो 1 अंक दिया जाता है और अगर छाती पर या फेस पर अटैक किया जाता है
लेग अटैक किया जाता है, प्रहार क्षमता दिखाई जाती है, किकिंग की जाती है, तो आपको 2 अंक दिए जाते हैं। तो 3-2 का स्कोर। बहुत ही अच्छा प्रयास था, फोर्स जनरेट करी, टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड किए अपनी किक को। 4-2। बार बार पैर को गिराकर प्रयास है उनका कि लेग अटैक करें, सिंगल लेग अटैक है, यहां पर बाहर गिराने में कामयाब। सुनिश्चित है यहां पर मिजोरम के खिलाड़ी को 2 अंक दिए जाएंगे और प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर उन्होंने किया है। 4-7 का स्कोर। प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं मेघालय के खिलाड़ी, जहां पर बढ़त बनाने में कामयाब हुए थे शुरुआती दौर में, मगर वहीं मिजोरम के खिलाड़ी की एक अच्छी कार्यकुशलता, प्रत्युत्तर दिया। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के खेल कौशल को बहुत भली भांति समझते हैं और कह सकते हैं यहाँ पर तू डाल डाल में पात पात, तो कभी किसी के पक्ष में तो कभी किसी के पक्ष में। और यही इस खेल की रोचकता भी है कि आप एक तरफा मुकाबला नहीं है, 6-7 अंकों में कोई ज्यादा अंतराल नहीं है कि किसी भी क्षण नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, कोई भी अपने पक्ष में कर सकता है खेल को। तो यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ी तकनीकी योग्यता का अगर हम बात करें तो काफी अच्छी तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और वो प्रयोग उनके विफल नहीं है, अंकों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं खेल कौशल काफी ऊंचे स्तर का है। तो 7-7 बराबरी का मुकाबला। पहला चक्र चल रहा है, विपिन बढ़त बनाने में कामयाब है, स्पीड ज्यादा देखने को नहीं मिल रही मगर तकनीक ज्यादा देखने को मिल रही है, ताकत ज्यादा देखने को मिल रही है। Very right, and every attack landing with impact. 65 kg men category, as Sanjeev was pointing out, and very little to separate these two young men. A 1-point lead for Mizoram. In the blue corner, and being dominant, being aggressive, being attacking, he has been controlling the platform as much as possible, pressurizing the fighter from Meghalaya. And Morris Rongpeti didn't really do much wrong. All concentration, all ears there, listening to every word that's coming from the coach. And when it's such a close contest, the insights from the coach and the management become very important for these fighters. Because when you're in the contest, when you're on the platform, you're not able to gauge every decision that you're taking or every movement of your opponent. And the coach sitting outside is able to give more objective reference to your performance. Round 2 in this exciting contest. Uppercut attempted there and a back fist as well. Both these fighters coming out really aggressive in this second bout. And what a lift, a reverse lift there. Switching stances continuously there. And smart play, very smart play. Realizing that the Mizo had overcommitted for his offense and attacking those legs. Meghalaya has come out really strong in this second round. Will be disappointed. Great positioning there. Was in position, had control of that leg. There seems to be some amount of fatigue in the Mizo. Is he tired? Both these men are tired. Swinging bombs there.
the Mizo has to do the difficult task. When you're so far down in points in the round, you start thinking about, okay, can I maneuver my opponent off the canvas? Walking into that straight jab there. Using that reach. Great beginning to that round by Meghalaya. He had the positioning, he had the lift, but not able to make him land on his fours. Lovely looping right connected. And an uppercut. See that left fist landing flush. He's fighting in the pocket, fighting really well. (8-3), 5-point lead for Meghalaya. And with that, the round comes to an end. Just in the nick of time, managing to score a point. (10-3). Is it going to be another fixture wherein we move into the third round? The judges will want to see the scorecards. नहीं लड़का का ही हो रहा है. Very little to separate these two men, Morris and Lal. Inseparable after 2 rounds. And we will see a third round. We have confirmation. Do these fighters have it in their legs? Definitely Lalrin looks like he has more energy. Morris definitely, when it comes to body language, looks a lot more exhausted, but that's how he's always looked right from the first round. And once the buzzer goes, he times those punches to perfection. What an exciting contest. Another bout moving into round 3, Sanjeev. बिल्कुल, अब तक का ये दूसरा मुकाबला है जो तीसरे राउंड तक चला है. इससे पहले भी मुकाबले की अगर हम बात करें तो बहुत ही और बराबरी का मुकाबला रह रहा है. ऐसा नहीं है कि मुकाबला किसी एक तरफा हो. लगातार जो बात चल रही है वो बहुत ही सुंदर खेल का परिचय यहाँ पर चल रहा था. इससे पहले की मुकाबले की अगर हम बात करें, वो मुकाबला भी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में रहा था, जिसमें मणिपुर के मुकाबले में रहा था. तो यहाँ पर अब ये मुकाबला 4-1 का स्कोर है. तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है. सिंगल लेग अटैक था. दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश, क्लिंच करने की कोशिश, रेफरी द्वारा स्टॉप का निर्देश. ब्रेक की कमांड. ब्रेक में दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे से दूर होना होता है. बार बार प्रयास वही कर रहे हैं कि वह कमर को पकड़े और गिराने का प्रयास है. यद्यपि सही तरीके से अगर गिरा पाए तो 2 अंक उनको सुनिश्चित है और मिल पाएंगे. 6-1 का स्कोर है अभी तक. बढ़त बनाने में कामयाब यहां पर मेघालय के खिलाड़ी मिजोरम के विरुद्ध. (6-1 का स्कोर. रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, आप अपने प्रतिद्वंदी को बार बार पकड़े नहीं, क्लिंच नहीं कर सकते हैं. नियमों का उल्लंघन माना जाता है. प्रयास अच्छे और यहां पर गिरा दिया है. बाहर गिरने में कामयाब हुए हैं मिजोरम के खिलाड़ी. तो 2 अंक सुनिश्चित है उनको और मिल जाएंगे. 1 से बढ़कर 3 स्कोर हो जाएगा उनका. स्कोर थोड़ा लेट आता है हमारे पास तो, मगर यहां पर जो खेल कौशल दिख रहा है, 7-3 का स्कोर. ब्लाइंडली घूम रहे हैं यहां पर, साफ दिख रहा है बहुत ज्यादा थक गए हैं. तो यहां पर इंडोरेंस वर्कआउट की अगर हम बात करें तो वापसी करने की कोशिश कर रहा है मिजोरम का खिलाड़ी. 8-4 का स्कोर समझी जा सकती है. कुछ ही क्षण शेष है. फुटवर्क ज्यादा कर रहे हैं, अपने आप को बचाने की रक्षात्मक ज्यादा हो रहे हैं बजाय इसके कि वह आक्रमण करे. तो इसलिए डिफेंस में ज्यादा जा रहे हैं मेघालय के खिलाड़ी. समझी जा सकती है. 8-4 का स्कोर है. कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. इससे पहले राउंड की अगर हम बात करें
तो वो 7-7 का स्कोर रहा था। तो ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र। हेडगियर को दुरुस्त कर रहे हैं, अपने कॉर्नर पे गए और यहां पर विजेता की घोषणा की जाएगी। देखना होगा अंकों के आधार पर इस मुकाबले को कौन जीतता है। और यहां पर इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए हैं मेघालय के खिलाड़ी। एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन रहा उनका। पहले राउंड में बेशक से 7-7 का स्कोर रहा था, मगर दूसरे राउंड को उन्होंने अपने पक्ष में किया और तीसरे और अंतिम राउंड को अपने पक्ष में कर पाने में 8-4 का स्कोर रहा था। कामयाब रहे और इस मुकाबले को जीता। 65 किलो भार वर्ग में आगे बढ़ने गए वो। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला होगा। देखना होगा अब मणिपुर और असम का मुकाबला जो होगा, उसमें जो मुकाबला जीतेगा उसके साथ चुनौती प्रस्तुत करेंगे मेघालय के खिलाड़ी। Tournament format, it becomes really interesting because if you fight 3 rounds, how much energy do you really have left to come back into the quarterfinals and the semifinals? Sometimes you just gas yourselves out in that first contest, but it's important to win. If you don't win, you don't even give yourself a chance in the quarters or the semis. In good spirit there, these Sanda Warriors, 65 kg class. Manipur taking on Assam. Manipur in red, Assam in blue. Boton Singh for Manipur taking on Bitupan Gogoi for Assam. Both these men sizing each other up, not committing for that offense. High kick. Nice, brilliant stomp there, foot stomp. Could have connected flush. One point each, very little separate these two fighters. Nice contact with that flush, mid-rib kick. Slip on the floor. And the official not awarding a point for that. There was a nice connect on the headgear. (3-2). Manipur with a single point lead. Both these fighters have a long reach, but both of them seem to be punch heavy. Keeping that guard up really high, trying to make sure that they don't give their opponent an opportunity to land a high kick flush on the face. And as we get into these weight classes, a single kick can change the momentum of a fight. 3-2, 1 point lead. Taking his opponent down. Definitely 2 more in his kitty. Watch out for the left jab. Good work there, upper body strength. Very open stance by the Assamese there. Bitupan Gogoi not keeping those arms up. An opportunity for a kick to land for the Manipuri. Can Bottom Singh? There you can see that left arm keeps dropping. And a flash attack on that side could make a huge difference. विपिन एक अच्छे प्रयास किया उन्होंने और यहाँ पर 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग की गई है, रेफरी द्वारा गणना की जा रही है। 7-7 बराबरी का स्कोर है, मगर यहाँ पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं असम के खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी मणिपुर के खिलाड़ी के विरुद्ध। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कार्यकुशलता 9-7। एक जो राउंड किक का प्रयोग किया गया था उससे 2 अंक और अर्जित किए, टारगेट एरिया पे लैंड किया, फेस पर पूरी तरह से लैंड हुआ, 2 अंक दिए, 1 अंक दिया गया उनको। तो यहाँ पर 9-8 का स्कोर है पहले राउंड में।
बढ़त बनाने में कामयाब है मणिपुर के खिलाड़ी, मगर असम के खिलाड़ी के खेल कौशल को हम कम नहीं आंक सकते हैं। एक अंक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बहुत अच्छा अंकों का अंतराल नहीं मान सकते हम। एक अंक कभी भी बराबरी पर लाकर अच्छी रणनीति का प्रयोग करके किया जा सकता है, गैप को मेंटेन किया जा सकता है। और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए, ये है रेफरी, निर्णायक हैं जो खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं। अभी इनकी ड्यूटी नहीं है, इसलिए अपनी ड्यूटी की प्रतीक्षा में अगले मुकाबले में जरूर हमें देखने को मिलेंगे ये कार्यकुशलता करते हुए। और यहाँ पर आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए, ये है जूरी, अंतिम निर्णय जो कि जजिस के स्कोर इनके पास जाते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं। हर एक जजिस के दिए गए अंक का भी आकलन किया जाता है। तो जूरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है बाउट को कंट्रोल करना, नियमबद्ध तरीके से मुकाबले को चलाना और जजिस द्वारा दिए गए स्कोर्स को भी मूल्यांकन करना कि उनके द्वारा दिए गए स्कोर सटीक है या नहीं। यह भी देखना जूरी की, हेड जज की और असिस्टेंट जज की नैतिक जिम्मेदारी होती है। और दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है, नो का स्कोर। और दूसरा चक्र प्रारंभ हो चुका है। यहां पर 9-8 का स्कोर था पहले चक्र में। यहां पर अभी एक अंक अर्जित कर पाने में कामयाब हुए हैं असम के खिलाड़ी मणिपुर के विरुद्ध। बाहर गिराया, मगर यहां पर स्वयं भी बाहर चले गए, इसलिए कोई फायदा नहीं। यद्यपि मैट पर आपको स्थिरता बनाए रखनी होगी, आपको स्वयं भी वहां पे रहना होगा। अपने प्रतिद्वंदी को यद्यपि आप मैट से बाहर, प्लेटफॉर्म से बाहर गिराने में कामयाब होते हैं तो सुनिश्चित है आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं जल्दी। ये बहुत ही सुंदर बैक साल्टो, एक अपने आप में उत्कृष्ट खेल का परिचय, एक अच्छा खेल। फ्रंट साल्टो लगाते तो बहुत से खिलाड़ी होते हैं, मगर बैक साल्टो लगाना अपने आप में कुश्ती में जिसे कहते हैं हाथी चिंगाड़ दाव, और इस दाव को अगर हम कहें तो रेसलिंग में सर्वाधिक प्रयोग करने वाले सुशील कुमार बहुत अच्छे तरीके से लगाते थे। मगर यहां बात चल रही है वुशु की, और वुशु में संध्या रानी जो कि यहीं नॉर्थ ईस्ट की ही रहने वाली अर्जुन पुरस्कार विजेता है, वो भी इसमें महारत हासिल है उनको। तो ये दाव चलते हुए यहां पर देखने को मिल रहे हैं उत्कृष्ट खेलों का प्रदर्शन, और समझी जा सकती है सेकंड ओलंपिक गेम्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट के, और उसमें उत्कृष्ट खिलाड़ी ही प्रदर्शित होते हैं, अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो अपने अपने राज्य के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर, यानी कि शिलोंग एक ब्रदर की तुलना में आकलन किया जाता है, और 7 सिस्टर्स मणिपुर, आसाम, ये सब 7 सिस्टर्स हैं। तो यहां पर ये मुकाबला चलता हुआ 65 किलो भार वर्ग का इंडोरेंस वर्कआउट की अगर हम बात करें, विपिन थोड़ा सा यहां पर कम दिख रहा है मणिपुर के खिलाड़ी में, बहुत ज्यादा थके से लग रहे हैं, फर्स्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। और इस खेल का रोचकता तभी बनी रहती है जब आप फर्स्ट अटैक करें, या तो आप फर्स्ट अटैक करें या आप काउंटर अटैक की गेम खेलें, तभी आप अपनी गेम को और पांचों जजिस को अपने खेल कौशल से प्रभावित कर पाएंगे। यद्यपि अगर आप फर्स्ट अटैक करेंगे तो विजिबल होने चाहिए आपके अटैक, और वो विजिबल भी होने चाहिए और पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड होने चाहिए, आपके पंच हो या किक हो। जैसे ये शेल गार्ड रख के अपने आप को बचाया, रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी भी बरतें, कॉशन दिया जाता है। रेफरी देखता है जब आप गलत तरीके से कोई चीज प्रयोग करते हैं तो उसके लिए आपको कॉशन भी दिया जाता है। 7-6 का स्कोर अभी तक बढ़त बनाने में कामयाब मणिपुर के खिलाड़ी असम के विरुद्ध। तो यानी कि पहले चक्र में भी उन्होंने 9-7 का स्कोर रहा था, और यहां पर अपने पक्ष में कर पाने में कामयाब हैं इस मुकाबले को, और ये मुकाबला यहां पर समाप्त हो गया है क्योंकि पहले चक्र में उन्होंने 9-8 और दूसरे चक्र में 7-6, तो ये मुकाबला उन्होंने अपने पक्ष में किया। मणिपुर ने विजयी हुए अपने प्रतिद्वंदी असम के खिलाड़ी के विरुद्ध।
Well, Manipur going to be represented by Longjum. Slight change there. This is going to be a bout between Arunachal and Sikkim. So Sikkim is going to be represented by Nischal Rai and Arunachal will be represented by Chawang Wongs. So Chawang takes on Nischal, Arunachal takes on Sikkim. 65 kg men category, third bout. All set here, opening with that right foot kick, switching stance again and again, not letting his opponent to get a read on him. Nice nimble movement, even though this is the 65 kg category. Both these players really fast on their feet. Check out that stomping action by both these fighters. Counter-attacking those leg kicks. Both these fighters are really good. Considering the weight class, both of these guys are really nimble. Nice kick down the middle, but not landing really. So this particular bout has seen a lot of action, a lot of movement, a lot of contact, but no clear strikes, no clean strikes. And finally, both of them off the tarmac. Sikkim coming up with a slender lead, 2-1, stretching that to 4. Cagey affair between these two. Definitely see a little bit of a skill match. Nice lift. A single leg control. He has an opportunity here, but not letting his opponent go. And that's another thing in Wushu. When you're going down, if you take your opponent's gloves with you, no harm done. Three-point lead for Sikkim. The blue corner. Just realizing a little late that the call had come from the official, the end of the first round. And Sikkim up by 3. This has been a really even contest. Both these fighters look to be really nimble. Though they are in a higher weight class, their movement seems to be like a low weight class category. But remains to be seen whether you can keep that up for 3 rounds. Arunachal now need to mount a fight back. Chawang Wangchu would want to do something different in the second round. The officials from different states watching proceedings, keeping a close eye as we get on to the second round here. Nischal Rai for Sikkim in blue, Arunachal's Chawang Wangchu in red. Watch out.
Look at that Muay Thai footwork by Chawang. Landing and then fleet-footing his way out of there. Just an overhead right connecting. Being a lot more tactical in this second round. Good productive round for Arunachal, this one. Two-one. Watch out this cagey affair. In and out, in and out. And the official urging them on. Come on, give us some action. Getting his opponent to the floor. Even Stevens now, 2 points each. Very little to separate these two fighters, capability-wise. Both of them being able to read the moves of the other. And there you go, surprise. What a connect, shin connect, KO, flush landing there, Sanjeev. बिल्कुल बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन था। यहाँ पर बहुत ही बैक किक लगाई थी उन्होंने, पूरी तरह से टारगेट एरिया पे उनके चेहरे पर लैंड हुई थी और इतनी फोर्स के साथ वो किक थी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी के द्वारा ये जो सिक्किम के खिलाड़ी के द्वारा जो ये प्रयास किया गया, बहुत ही सुंदर खेल था। किक पूरी तरह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ से उन्होंने फोर्स जनरेट की थी और ट्विस्ट किया था बॉडी पर, पंजे पर अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद पूरी तरह से ब्लेड, जो लेग का ब्लेड है वो पूरी तरह से उनके प्रतिद्वंदी के टारगेट पे यानी कि चेहरे पर लैंड हुआ। इतनी फोर्स से जनरेट हुई थी, वो फोर्स जनरेट हुई थी और कोई मौका नहीं दिया और बहुत ही सुंदर खेल के साथ इस मुकाबले को जीता। हालांकि पहले चक्र में भी अंकों के आधार पर भी वे जीत रहे थे, 2-5 का स्कोर था, मगर यहाँ पर तकनीक के आधार पर उन्होंने इस मुकाबले को बहुत ही सुंदर तरीके से KO किया। रेफरी द्वारा गणना की गई और इस मुकाबले को नॉकआउट किया गया। और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें 65 किलो भार वर्ग का, जो कि त्रिपुरा और नागालैंड के मध्य मुकाबला होगा। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, अपने अपने राज्य के स्वर्ण पदक विजेता हैं स्टेट चैंपियनशिप के। और रेफरी ने उनकी वेशभूषा का मूल्यांकन किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद जूरी और कोचेस को विश किया, यानी कि प्रणाम करने के बाद इस मुकाबले की शुरुआत, अभिनंदन करना, अभिवादन करना बहुत जरूरी। और यहाँ पर मुक्कों का प्रहार लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्ट्रेट जैब का प्रयोग, अपरकट और हुक का प्रयोग यहाँ पर त्रिपुरा के खिलाड़ी के द्वारा एक अच्छा प्रयास था उनका। शुरुआती क्षणों में ही उन्होंने कॉम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग किया। श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता उनकी जो रही वो काफी अच्छी रही। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सावधानी बरतें। अपरकट और यहाँ पर स्ट्रेट जैब, लेफ्ट स्ट्रेट के बाद राइट स्ट्रेट के बाद फिर लेफ्ट। यहाँ पर हम कह सकते हैं लगातार जो कॉम्बिनेशन पंचेस है उनके मुक्के वो बहुत अच्छे हैं, मगर गिराने का प्रयास किया नागालैंड के खिलाड़ी ने, मगर उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं। स्वयं भी साथ ही बाहर गए प्लेटफॉर्म के, तो प्रोटेक्शन एरिया पे गिरे, मगर यहाँ पर कोई लाभ नहीं होगा उनको। त्रिपुरा के खिलाड़ी 2-1 का स्कोर, अंकों में बढ़त बनाने में कामयाब। रेड कॉर्नर के खिलाड़ी त्रिपुरा के रेड साइड और नागालैंड के ब्लू साइड के नीली वेशभूषा में।
प्रयास अच्छे, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली जा रहे हैं यहाँ पर नागालैंड के खिलाड़ी। बहुत ज्यादा नीचे की ओर झुक जाते हैं, ब्लाइंडली देख नहीं पाते अपने प्रतिद्वंदी को, जिस वजह से उनको नुकसान है। एक रनिंग स्टाइल में आगे की ओर जा रहे हैं, फुटवर्क करके जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बॉडी वेट को, हाथों पैरों के तालमेल को बना के रखें, वो उनके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। गिराने के प्रयास उनके 2 बार हुए मगर स्वयं भी बाहर चले गए, तो यहाँ पर बार बार वो गिराने में कामयाब होते हैं। यद्यपि अगर स्वयं बाहर ना जाए तो 2 बार गिराते तो ये मुकाबला उनके पक्ष में होता, जो कि अभी उनकी मैं कह सकता हूं त्रुटि है, एक गलती है कि स्वयं भी बाहर जा रहे हैं। खेल कौशल अच्छा है मगर उस खेल कौशल अच्छा तभी माना जाएगा जब आप अंकों में परिवर्तित करते हैं। लेग अटैक उनका अच्छा है मगर ये देखिएगा फिर बाहर चले गए, तो यहाँ पर एडवांटेज जो है वो त्रिपुरा के खिलाड़ी के पास है। मैं कह सकता हूँ त्रिपुरा के खिलाड़ी की सूझबूझ अच्छी है। विपिन अपने प्रतिद्वंदी को जो जकड़ते पकड़ते हैं वो पकड़ अपनी छोड़ते नहीं है, तो उसको भी साथ लेकर आते हैं। यहाँ पर 2 अंक जरूर मिले, 1 अंक जरूर मिलेगा। गिराने में कामयाब हुए थे मगर एक चूक जो मैं कह रहा हूं नागालैंड के खिलाड़ी की वो है कि साथ यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना होगा, धैर्यता के साथ बैलेंस भी बनाना होगा। अगर आप बैलेंस नहीं बनाते हैं तो आप स्वयं भी बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर 4-1 का स्कोर। That's right, Sanjeev. Very important to keep the momentum in control while you're trying to push your opponent off the turf. And while the fighter from Nagaland has been able to drive his opponent off the platform repeatedly, the fighter from Tripura has been able to maintain that 2-point lead as we come to an end of this first round. 4 points to 2, leading into the second round. So when there is a lot of action like this in these rounds, the officials play a very crucial role. There you can see in the foreground the officials sitting to cover every angle. And sometimes in a contact sport, you might miss out on the offense because from some angles you might not see the fight land. Lot more technical here, the dugout for Nagaland. They have some catching up to do after losing out that first round. So it remains to be seen whether Nagaland would want to do this on points or would decide to push out their opponent from the platform. Tripura probably going to go for punch offense. Looking at their footwork doesn't seem to be very kick friendly. Just pacing around. Nice thigh kick there by the fighter from Nagaland. Registering a point there. Once again. This time again, there's an opportunity to take down. And this time, a point awarded. Nagaland slowly and steadily up by 2. 3-1 now. Nice flush connect on the thighs. Sure, there'll be a 2-point change very soon. There's an opportunity as a single leg hold. Once again, the same happening. Able to push his opponent off the tarmac, but not able to convert it into points. 4-1, up by 3. In control, Nagaland. Tripura seems to have moved to a counter-attacking style.
giving an opportunity for the Naga fighter to take his shots and then wanting to come up with some form of defense. Here's an opportunity to take him down. Not counted, says the official. 4-1, 3-point lead now. Can Nagaland see this through? Nice straight jab landing there flush on the chin. End of round 2. Very close round. The official sending them back. A feeler from the judges saying that yes, we might need a third round here. And they award this round to Nagaland. So we are split now. Sanjeev, exciting times ahead. Another 3-round contest. बिल्कुल ये तीसरा मुकाबला है जो तीसरे राउंड तक जा रहा है। यहाँ पर एक चीज जरूर है कि त्रिपुरा के खिलाड़ी का खेल कौशल अच्छा है, मगर नागालैंड के खिलाड़ी की जो मैं कह सकता हूँ ऑब्जर्वेशन वो काफ़ी अच्छी है। जैसे ही त्रिपुरा के खिलाड़ी उनके नज़दीक आते हैं तभी वो अपनी रणनीति प्लान ए और प्लान बी दोनों बनाकर चल रहे हैं। जब भी उनकी एक टेक्निक विफल होती है तो तुरंत दूसरी टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा फुटवर्क करते रनिंग स्टाइल में भाग रहे थे, मगर जहाँ पर एकदम चपलता से रुके, स्टॉप हुए और एकदम लेग अटैक किया, तो उनकी जो प्लानिंग है वो अपने आप में एक रणनीति पूरी तरह से दिमाग में सोच कर चल रहे हैं। अगर आप बारीकी से इस खेल को देखें, इनके इस बाउट को, स्ट्रेट जैब बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट जैब लगाया, मगर वही देखिए प्रहारक क्षमता को विफल करने में कामयाब होते हैं। थोड़ा सा यद्यपि अगर वो अपने आप को रोक कर चले धैर्यता के साथ, तो पहले चक्र में भी उन्होंने काफी बार प्लेटफॉर्म से बाहर गिराने का प्रयास किया था, मगर उसमें सफलता उनको नहीं मिल पाई और त्रिपुरा के खिलाड़ी ने 1 अंक अभी तक अर्जित कर लिया है, बढ़त बना ली है। देखना होगा यहाँ पर, यद्यपि ये तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है, जो भी खिलाड़ी यहाँ पर अपनी बढ़त को बरकरार रखेगा और इस राउंड को जीतेगा वो इस मुकाबले को भी जीतेगा। तो यहाँ पर चलता हुआ ये मुकाबला, तीसरा राउंड। बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं त्रिपुरा के खिलाड़ी, अपने प्रतिद्वंदी को अपने नजदीक आने दे रहे हैं, तो ये उनके लिए एक गलती है। 1-1 अंक बराबरी पर चलता है ये मुकाबला। ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए, आक्रामक रहना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी और अंतिम राउंड है। तो यहाँ पर आपके पास पूरी स्किल दिखानी होगी आपको अपने खेल की, तभी आप पांचों जजेस को प्रभावित कर पाएंगे अपने खेल कौशल से। तो यहाँ पर ये चीज समझनी चाहिए दोनों ही खिलाड़ियों को, समय व्यतीत नहीं कर सकते, लगातार प्रयासरत रहना होगा, आपको फास्ट अटैक करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ज्यादा पीछे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर घुटने से प्रहारक क्षमता दिखाई उन्होंने, अच्छा प्रयास था, चेस्ट पर अटैक था उनका, घुटने से अंक जरूर आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देरी में आता है, मगर अंक जरूर मिलता है। और लगातार प्रयासरत यहाँ पर शेल गार्ड रखकर अपने आप को बचाने की कोशिश, यहाँ पर फेंट अटैक के साथ साथ भ्रमित कर रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को कि वह उन पर अटैक करने आए, आमंत्रण सा दे रहे हैं नागालैंड के खिलाड़ी कि उनके नजदीक आए, जैसे ही आक्रमण करने आए तो वो उन पर प्रहारक क्षमता अपनी दिखाएं। ये नागालैंड के खिलाड़ी की रणनीति। और सबसे बड़ी चीज, अपने हैंड को बार बार अप एंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि अपने प्रतिद्वंदी को अपने से दूर रखना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी उछलकर लात चलाई उन्होंने और यहाँ पर बैक किक, और ये मुकाबला यहीं समाप्त और नागालैंड ने इस मुकाबले को जीता है। देखना होगा अंतिम निर्णय, ऑफिशियल अनाउंसमेंट वो किसके पक्ष में जाती है, यह देखना होगा। नागालैंड बहुत ही सुंदर खेल का परिचय, इस मुकाबले को उन्होंने जीता। पहले ही चक्र में वो बहुत अच्छा खेल कौशल दिखाया था, उन्होंने बाहर गिरा पाने में कामयाब थे, मगर अंकों में परिवर्तित नहीं कर पाए अपने उस प्रयास को, क्योंकि वह स्वयं भी उसके साथ ही प्लेयर के साथ जा रहे थे, अपने प्रतिद्वंदी के साथ बाहर जा रहे थे। यद्यपि थोड़ी सी रणनीति अपनी चेंज करें, अपनी कार्यकुशलता को बदलें, विपरीत करें और अच्छी तरीके से टेक्निक को इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो इस मुकाबले को वो पहले चरण में ही जीत पाते। मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अच्छे खेल का प्रदर्शन और इस मुकाबले को जीता नागालैंड ने अपने प्रतिद्वंदी त्रिपुरा के कृष्णा के विरुद्ध।
और ये जूरी ऑफ अपील, जजेस, असिस्टेंट रेफरी अनाउंसमेंट करते हुए अगले मुकाबले की, अगला मुकाबला जो कि होगा 70 किलो भार वर्ग में। और ये असिस्टेंट हेड जज हैं, असम की हैं, और ये है रेफरी अगले मुकाबले के लिए। रेफरी की पुकार हो चुकी है। सर्वप्रथम रेफरी मैट पर आते हैं और उसके बाद खिलाड़ी मैट पर प्रवेश करते हैं। और रेफरी मैट पर आ चुके हैं। अब अगली पुकार जो होगी वो 70 किलो भार वर्ग के खिलाड़ियों की होगी, जो कि मणिपुर और त्रिपुरा के खिलाड़ियों के मध्य मुकाबला होगा। मणिपुर के ये खिलाड़ी जो कि रेड कॉर्नर के, रेड साइड के हैं। अभिनंदन करते हुए सभी का, जजेस का, जूरी का, अपने कोचिस का, और ये है इनको चुनौती देते हुए त्रिपुरा के ब्लू साइड के खिलाड़ी। दोनों के मध्य ये मुकाबला होगा। 70 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। वजन वर्ग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 4 मुकाबले होंगे 70 किलो के, और इसके बाद 4 मुकाबले होंगे 75 किलो के। आज के अगर हम मुकाबलों की अगर हम बात करें विपिन, तो ये मुकाबला हमें ताकत ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि भारी वजन वर्ग है। गम शील्ड, हेड का प्रोटेक्टर और ग्लव्स और चेस्ट गार्ड को देखते हुए, निरीक्षण करते हुए रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी वेशभूषा का निरीक्षण करना, और ग्लव्सों को दबाकर जो देखा जाता है उसमें यह देखा जाता है कि ग्लव्स के अंदर कोई अंगूठी तो नहीं पहनी हुई है जिससे आप अपने प्रतिद्वंदी को चोटग्रस्त कर सके। तो यह देखना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। इसीलिए वो ग्लव्स को दबाकर देखता है कि नकल पोर्शन के नीचे कोई रिंग या कोई ऐसा पदार्थ तो ग्लव्स के अंदर नहीं छुपा रखा जिससे वह प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचा सके अपने। तो यहाँ पर हेडगियर ठीक से नहीं दुरुस्त था, दुरुस्त तरीके से बंधा हुआ था, जिस वजह से ये खुल गया। तो हेड इंजरी से बचाता है हेडगियर, बहुत ज़रूरी है। मुक्केबाजी में भी यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, बस चेस्ट गार्ड इसमें एक अलग है जो यूज़ किया जाता है। मुक्केबाजी में फुटवर्क, पैरों में आपके ग्लव, शूज़ होते हैं, और वो बात समझी जाती है। वहाँ पर ये गद्दे का मैट है, वहाँ पर वुडन फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर के ऊपर मैपिंग मैट होता है। और ये 6-0 का स्कोर। मणिपुर के खिलाड़ी शुरुआती दौर में ही बढ़त बनाने में कामयाब, अपने प्रतिद्वंदी त्रिपुरा के खिलाड़ी के विरुद्ध। रेफरी द्वारा गणना 2 पॉइंट और मिलेंगे उनको। गणना करवाई है, एक अच्छा प्रहारक क्षमता, और वार्निंग दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने पर यहां पर वार्निंग दी गई। वार्निंग के 2 अंक उनको मिल गए हैं। जब भी प्रतिद्वंदी को वार्निंग दी जाती है, नियमों का उल्लंघन करने पर वार्निंग किया जाता है, तो उसको अंक दिए जाते हैं। दूसरी बार वार्निंग और 2 अंक और मिल गए। अब तीसरी बार अगर वार्निंग मिल गई तो प्रतिद्वंदी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। यहां पर 2 अंक जरूर मिलेंगे त्रिपुरा के खिलाड़ी को। 14-2 का स्कोर, बढ़त बनाने में कामयाब। मुकाबला यहीं पर समाप्त, क्योंकि 12 अंकों का अंतराल हो चुका है। जब डिफरेंस 12 अंकों का आ जाए, नहीं रोका गया। अंकों की अगर हम बात करें तो 15-3 का स्कोर है वही। अभी 1 अंक और लेना होगा मणिपुर के खिलाड़ी को इस मुकाबले को जीतने के लिए। यद्यपि 1 अंक उसके पक्ष में आता है तो यह मुकाबला यहीं रोक दिया जाएगा। 12 अंकों का अंतराल अगर हो गया तो डिफरेंस। संभल कर खेलना होगा त्रिपुरा के खिलाड़ी को। 1 अंक की ओर कगार है। 17-3 मुकाबला रुकना चाहिए था। यहां पर 12 अंकों का अंतराल हो चुका है। स्ट्रेट पंचेस, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय, और यह मुकाबला यहीं पर समाप्त। एक तरफा किया, 17-3 का स्कोर। यहां पर एक अच्छी प्रारक क्षमता रही, बाहर की ओर बुला लिया, चोटग्रस्त हो गए थे यहां पर त्रिपुरा के खिलाड़ी, मगर 21-3 का स्कोर। बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन। पहले ही चक्र में अपने प्रतिद्वंदी को एक तरफा धराशायी कर दिया। बहुत ही सुंदर काउंटिंग भी करी थी, और श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो उनके पंचेस थे पूरी तरह से लैंड हुए चेहरे पर अपने प्रतिद्वंदी के। तो यहां पर हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी सूझबूझ, और उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था। टारगेट एरिया जैसे ही उनको खाली दिखा, वहीं पर उन्होंने प्रहारक क्षमता दिखाई और अंकों में परिवर्तित किया अपने प्रहारक क्षमता को। विपुल, बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन था।
Very true, Sanjeev, and that got us kicked and running in the 70 kg men's category. Manipur taking on Tripura there. And in this particular fight, we are going to see Arunachal Pradesh fight it out against Sikkim. Lika Tad for Arunachal will be taking on Furba Dorji from Sikkim. Arunachal in red, Sikkim in blue. Arunachal on your left, Sikkim on your right. Let's not forget, this is 70 kgs, so you get one strike at the right place. It can make all the difference. Managing to get his opponent onto the floor. 1 point each right now. Nice connection there onto the torso. Definite height advantage for the fighter from Sikkim. It remains to be seen whether the fighter from Arunachal can leverage that upper body strength. Just as we spoke, that upper body strength coming into play. Two points each. Very little to separate these two. Off the floor. The official saying both of them are equal, but there's an injury there. Not landing too well. There you can see the anguish on the player's face. And we couldn't really get a clear view of what exactly happened. Nice to see the fighter back and running. We weren't really expecting him to continue. From where I was sitting, I was thinking that perhaps he might have popped his knee, but nice to see that's not the case. Back in action. Sikkim with a 2-point lead. Sikkim in blue. Arunachal Pradesh in red, up with a 2-point lead. Two-point lead. A nice strong connection. You heard that nice and loud. Both the leg kick and the fist landing. Good defense there. And finally Arunachal registering some quick movement. And he will get those points eventually. And that's something which is not allowed in Wushu. You can't get a choke hold and then hold it for a long duration. Just a couple of seconds till where you're allowed to grapple without any movement, and then you have to showcase some kind of movement. Sikkim running away with this bout. Definitely faster off his feet.
is the fighter from Sikkim. And with that, we come to an end of the first round. Comfortably in the blue corner. Sikkim taking this one by 5 points. And you can see the coach and the manager trying to give some words of advice to their fighters. And like we keep saying, the perspective from outside really important. While you're a fighter, you're in the ring, you're on the mat, or you're on the platform, you are so focused about what your opponent is doing. Sometimes you can't analyze and come up with a counter. And the coach and the manager, very important to see things from outside and be able to give the right kind of insight to your fighter. And let's see if fortune will change for Arunachal Pradesh in this round 2. Right, we are back for round 2. Arunachal in red, Sikkim in blue. Sikkim comfortably cruising to a victory in round 1. The official not too happy with a bloodied nose. It's kind of important. The break call by the official, not really heard by both these players. Watch out for that left leg attack by the fighter from Sikkim. Arunachal a point up now. Difficult to maneuver, even though he got a good grab around his waist. Nice offense, not allowing the fighter to settle and connecting really well on the torso. Oh, flush kick there, Sanjeev, landing flush on the jawline. Beautiful KO there, knockout. And with that, Sikkim takes this bout. He's not coming back from that. Flush on the chin, you saw it land, you saw the head bobble back and the eyes roll. And once the excitement of the KO is done, you really start to worry about the fitness and the well-being of the fighter, and you want this gentleman to be up and running. There you can see the respect amongst these fighters. It's all for points eventually. And Furba Dorje registering a statement victory. बिल्कुल बहुत ही अच्छी प्रहारक क्षमता किक का प्रयोग किया गया था। इससे पहले ये अब तक का दूसरा केओ है। इससे पहले अगर केओ की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मध्य मुकाबला हुआ था और सिक्किम के खिलाड़ी ने केओ किया था। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य ही मुकाबला चल रहा है, जिसमें सिक्किम के खिलाड़ी ने अरुणाचल प्रदेश को केओ किया। तो यहाँ पर कोइंसिडेंट है कि दोनों ही मुकाबलों में सिक्किम के खिलाड़ियों ने केओ किया है। मगर खेल कौशल की अगर हम बात करें विपिन, बहुत अच्छा खेल कौशल था। 4-9 का स्कोर पहले चक्र में भी था उनका, सिक्किम के खिलाड़ी का खेल कौशल बहुत अच्छा था। एक अच्छे खेल कौशल के साथ उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था इस बाउट को। तो जो कंट्रोल था वो उनका काफी अच्छा था, निर्णायक क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी और जो अटैकिंग पोजीशन थी उनकी वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। और वही चीज उनको विजय श्री की ओर अग्रसर कर गई कि उनका जो प्रहारक क्षमता थी वो बहुत ही सटीक, सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी किक को राउंड किया। राउंड करने के बाद टारगेट एरिया पे लैंड किया और पूरी तरह से उनका पैरों का ब्लेड लैंड हुआ। और ये नागालैंड और असम के मध्य ये मुकाबला 70 किलो भार वर्ग का
अगला मुकाबला पहला चक्र प्रारंभ हो चुका है विपिन। Reminding us once again, Sanjeev, that it's a 70 kg category. So one strike and it can be curtains. Usually if you get a shin landing in your face, there's very little that you can do to get back from that. In some malfunction there in the gear, you're not supposed to get off that easy. That also in the opening seconds of a bout. And sometimes you're so charged up as a fighter or as a coach, you're so zoned in about the contest that you don't really realize how effectively the gear is on. And then you get, an opponent gripping it and then off it comes. So Nagaland in red, taking on Assam in blue. Let's hope this is as exciting as the previous contest. Definitely not as fleet-footed. You can already see the Assamese fighter breathing really heavy. The fighter from Nagaland conserving energy. Strong connect there, but also managing to grab. That torso kick will count for 2. Nice connect there on the thighs. The Naga fighter definitely seems a lot faster and can also read his plays. Just reacting with smoothness and finesse to the movement of the Assamese in front of him. A 5-1, 4-point lead for Nagaland. So there's an opportunity for that right flush to land for the Assamese fighter, but he's so busy parrying the leg attacks of the fighter from Nagaland that not getting an opportunity to set up his own offense. There you can see that left hand really low from the Naga fighter. Good strong round 1 for Nagaland, and Assam there on your screens will want to talk things over. As Nagaland came up with a commanding performance. Rakesh Kumar there on your screens, really effective, really emphatic in that first round. Prashanta there will have to do something different in round 2 and possibly take this fight to round 3. Wushu long bayar penjat dari boxing sini dalam 4 ya. Dan dia ini kalau aja. Dan dia itu mengurus nak mana? Good judgment by the official, calling a foul there. Consequently, a penalty there. And you're not allowed to attack your opponent once both his knees are on the ground. And especially since the official had already called a stop. So 3-1, Nagaland up by 2. Watch out for the spaces here. Watch how the hands drop every time there's a kick coming in his direction. So the Assamese fighter leaves himself vulnerable. And you will see that complex play. And takes the 2 points in the process. Nagaland 7, Assam 2.
this is a repeated problem that the fighter is dealing with. And he's lucky that the opponent isn't really arguing, saying that it's time-wasting tactics, because the opponent is benefiting from a good 10-15 seconds of recharging their batteries. Nice launch right down the middle. And with this, he wins the round, sending his opponent out of bounds twice in the round, lands you the round. No stopping this Naga Express. Rakesh Kumar takes that victory over Prashanta Hadik. Thế nào? Đúng đó. Kapan nung lạ nè, nung lạ nè, mình phải game cái thằng quân đi à, nung yo timing này vẫn chẳng phải là điểm như này. Right, so we get into the last and final bout in the 70 kg category. It's Mizoram taking on Meghalaya, the hosts. The hosts, Meghalaya in blue, Mizoram in red. John Denise lands that right kick into the thighs for 2 points. That solid right hand punch landing for Meghalaya. Nice land on the right hand there. Meghalaya running off to a quick 5-point lead. Make that 6. Nice push kick right down the middle. 70 kgs here. Confirmation of that contest between Mizoram and Meghalaya. And the home team in action, creating a lot of excitement and a buzz here at the arena. 7-point lead. And with that, the first round going to the home state.
So John Denise of Mizoram in red will have to do something different in this round too. The first one-sided affair for the home side. But will the story be different in round two? Opportunity here to trip the fighter. The Mizo opening the account. John Denise definitely trying to write a different script. Up 4-0. Hello? 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 What a lift! What power! The Mizo fighter definitely came up with a strong opening in this round too. But what a statement couple of points there by the Meghalayan. Nice flush right hand connecting. That's what happens sometimes. You open the first part of the round really strong and then you don't have enough fuel in your tank and your legs become wobbly, your hand speed reduces and your opponents get an opportunity to make a comeback. And from nowhere, Meghalaya suddenly takes the lead. Up 6-2 in this round too. Last contest here, 70 kg men's category. And that's the thing in these heavier weight classes, you can't take anything for granted because you suddenly have an opportunity, you connect flush, then the contest can end, but not on this occasion. Good, strong performance in the last bout. Meghalaya can be confident that they will register a win, making it into the quarterfinals. And a cheer from this crowd as they celebrate a victory for the home state. Right, so this wraps up proceedings in the 70 kg men's category. We're going to move on to the heaviest category here, the 75 kg men. And we were talking about power in the 70 kg category, Sanjeev. In the 75 kg category, even a partial hit will be a knockout. बिल्कुल यहाँ पर अभी तक वैसे 2 मुकाबले हमें 3 मुकाबले देखने को मिल गए हैं नॉकआउट वाले, मगर अब 75 किलो भार वर्ग में आपको ताकत का प्रदर्शन जो है ना बहुत अधिक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जजेस आसाम की हैं, ये जज असिस्टेंट जज अनाउंसिंग भी कर रही हैं। और यहाँ पर 75 किलो भार वर्ग का मुकाबला जो कि आसाम और मेघालय के खिलाड़ियों के मध्य होगा। पहला मुकाबला 75 किलो भार वर्ग का। और आज के श्रृंखलाबद्ध मुकाबलों की अगर हम बात करें तो ये 75 किलो बड़ा वेट सबसे बड़ा वेट है और ये आखिरी मुकाबले चलेंगे। अब 4 मुकाबले खेले जाएंगे 75 किलो भार वर्ग में। तो ये पहला मुकाबला 75 किलो भार वर्ग का। हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही रोमांचकारी मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। वुशु में इतने अच्छे मुकाबले, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बहुत कम आकलन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिल रहा है। खिलाड़ियों का खेल कौशल
एक तरफा मुकाबला कोई भी नहीं है, बहुत ही नजदीकी मुकाबले से खिलाड़ी जीत रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये सेकंड ओलंपिक नॉर्थ ईस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी पौध तैयार कर रहा है आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए। तो यहीं से ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जरूर देखने को मिलेंगे। Very true. We've been really impressed with the level of Wushu that we've seen here today. And it will only get better as we move into the quarterfinals and the semifinals and the finals. Right now, 75 kg men, when these big burly guys hit out against each other, the crowd gets really excited. What an animated and excited crowd we have. Packed to the rafters, the small stadium, but enjoying every moment. It's also the home team in action. Flush hits and then pushing his opponent off the mat. Let's reiterate, Assam in red. It's Nikesh Mondal taking on Meghalaya Nongrum in blue. And both these men are heavy-handed. And what also happens in the 75 kg category is that you have so much momentum with your movement. If you have a smart fighter at the opponent, or as an opponent, he can leverage that to his advantage. Timeout on the floor as the mouth guard pops out. The official quickly realizing that and getting us moving. Stop calls the official. Reset there. 5-4. Close contest and really exciting. Nice connect. 2 connects there. The official insisting. And when I call for a break, go for a break. Both these men going hell for leather. Swinging wildly. And if any one of these punches has a little more body weight behind it, it will send the other one knocking. This is turning into a slugfest. Both waiting for the other to go. And the arms will be tired after all that swinging. 7 points each. End of the first round. What an even fight we've had so far, Sanjeev. 7 points each. And the crowd is really enjoying every minute of this. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला कह सकते हैं। 75 किलो भार वर्ग का 7-7 अंक दोनों ही खिलाड़ियों ने प्राप्त कर लिए हैं, अर्जित कर लिए हैं। मगर यहां पर जो सबसे रोचकता देखने को मिली, प्रहारक क्षमता, स्ट्रेट जैब, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो मुक्कों के प्रहार थे, स्ट्रेट जैब थे, बहुत ही अच्छे थे, पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड हुए, जिससे खिलाड़ियों ने अंक अर्जित किए। और आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए यहाँ है मेघालय के ये खिलाड़ी, जिनको बताते समझाते हुए उनकी आगे की रणनीति के बारे में। और ये हैं असम के खिलाड़ी निकेश मंडल और निर्णायक जजेस, इन प्रतियोगिताओं के जजेस इस प्रतियोगिता के, जो कि खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं, उनको अंक प्रदान करते हैं उनके खेल कौशल को देखने के पर। और यहाँ पर पहला चक्र समाप्त हुआ था, दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। दूसरा चक्र 7-7 बराबरी पर हुई है चलता मुकाबला। मैट के मध्य बुलाकर दूसरा राउंड। प्रयास अच्छा, दोनों ही प्रयासों में खिलाड़ियों का स्ट्रेट जैब बहुत ही सुंदर तरीके से, प्रहारक क्षमता, पुशिंग और मगर पुशिंग के साथ ही प्रहारक क्षमता अच्छी। नकल पोर्शन पूरी तरह से टारगेट एरिया पे लैंड होना चाहिए। जो मुक्के का प्रहार है वह साफ विजिबल होना चाहिए। यहां पर गिराने में कामयाब, 1 अंक और प्रदान किया गया। 3-0 का स्कोर। असम के खिलाड़ी ने बढ़त बनाने का प्रयास शुरुआती दौर में
7-7 का स्कोर रहा था पहले राउंड की। अगर हम बात करें दूसरा राउंड चलता हुआ, यहां पर दोनों ही खिलाड़ी अपने एक्शन जोन से बाहर की ओर आए, प्रोटेक्शन जोन पर। प्रयास अच्छे, बहुत ही सुंदर स्ट्रेट जैब, लेफ्ट स्ट्रेट, और टांग पकड़कर गिराने का प्रयास था, मगर वहीं असम के खिलाड़ी ने अपने ही उनके दाव को परिवर्तित किया, अपने लिए लाभान्वित किया अपने आप को, और 6-0 का स्कोर यानी कि बढ़त बनाने में कामयाब। अभी तक असम के खिलाड़ी, थोड़ा सा जोश के साथ होश रखना होगा यहां पर मेघालय के खिलाड़ी को, यद्यपि धैर्य के साथ कंसंट्रेट करके, अपने एकाग्र करके अपने आप को खेले तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां पर जैसे ही नजदीक आए वहीं पर रिवॉल्व होना चाह रहे थे, घूमना चाह रहे थे, मगर प्रत्युत्तर में कनेक्ट किया, प्रहारक क्षमता दिखाई असम ने। 8-10-0 का स्कोर हो चुका है अब तक। घुटने का प्रहार करना चाहते थे, घुटने से प्रहार करना चाहते थे, मगर बहुत जब आप नजदीक जाते हैं तब आपको अपनी प्रहारक क्षमता दिखानी चाहिए। यहां पर लॉन्ग रीच का पूरा फायदा है असम के खिलाड़ी के पास। कद काठी की अगर हम बात करें तो अपने प्रतिद्वंदी मेघालय के खिलाड़ी के विपरीत वह लॉन्ग रीच का प्रयोग कर रहे हैं, तो कद काठी उनकी ऊंची है, थोड़े से स्लाइडली लंबे हैं, मगर ये लंबाई उनको ज्यादा एडवांटेज दे रही है, और वो उस लंबाई का फायदा भी उठा रहे हैं, लॉन्ग रीच का फायदा भी उठा रहे हैं। जैसे ही प्रहार करते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं अपने बॉडी को, जिससे उनका पंच और दूर तक जाता है। और यहां पर गमशील्ड बाहर की ओर गिर गई। काउंटिंग, बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था, और यहां पर रेफरी ने मुकाबला 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग है। पूछा गया खिलाड़ी से कि वह खेलना चाहता है आगे कि नहीं, और उसके बाद माउथ गार्ड, जो उनका गमशील्ड बाहर की ओर गिर गई थी, उसको उनके सेकेंडिंग ने वॉश करके धो के दोबारा मुंह में डाला, और रेफरी द्वारा चेताया गया कि यहां पर अब गमशील्ड दोबारा नहीं गिरनी चाहिए। दूसरी बार उनकी गमशील्ड गिरी है। 13-2 का स्कोर हो चुका है। पूरी तरह से मुकाबला जो है असम के खिलाड़ी ने अपने पक्ष में कर लिया है। रेड कॉर्नर के हैं असम के खिलाड़ी निकेश मंडल, और यहां पर विसल का संकेत। 15-2 का स्कोर, मुकाबला यहां पर जीत चुके हैं असम के खिलाड़ी। राउंड समाप्त हुआ है, 15-2 का स्कोर है अभी। और यहां पर रिलैक्स करते हुए अपने खिलाड़ी को मेघालय के ये प्रशिक्षक बताते समझाते हुए पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है अब मुकाबले को असम के खिलाड़ी ने अपने पक्ष में। और यहां पर उनका अब अंतिम राउंड जो होगा वह देखना होगा कि मेघालय के खिलाड़ी वापसी कर पाते हैं या नहीं, यह देखना होगा। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा, मगर हाँ मुश्किल जरूर है उनके लिए, क्योंकि पहले तो अंकों के अंतराल को पूरी तरह से कम करना है। यानी कि पहला राउंड जो था वो 7-7 का रहा, दूसरा राउंड 15-2 का रहा, तो यहाँ पर तीसरा और अंतिम राउंड है। तो यहाँ पर अगर अब इस राउंड में वह जीतते हैं, मेघालय के खिलाड़ी अंक अर्जित करते हैं अधिक से अधिक, तो यह मुकाबला वह जीतेंगे, अन्यथा यह मुकाबला पूरी तरह से असम के खिलाड़ी के पक्ष में है। लॉन्ग रीच का फायदा और असम के खिलाड़ी का लेग अटैक, और उसके बाद प्रहारक क्षमता स्ट्रेट जैब के साथ लगातार श्रृंखलाबद्ध शेल गार्ड रखना चाहिए, यहाँ पर बहुत जरूरी है शेल गार्ड रखना। मेघालय के खिलाड़ी का अच्छा प्रयास था, प्रयास अच्छा था, शेल गार्ड रखते तो और अच्छा खूबसूरती से अपनी आत्मरक्षा कर सकते थे। पीछे जा रहे हैं, बैक पैंडलिंग कर रहे हैं, यह उनके लिए नुकसानदेह है। साइड स्टेप लेना चाहिए उनको, जबकि आप साइड स्टेप लेंगे तो अपने प्रतिद्वंदी के प्रहार से अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी आत्मरक्षा कर पाएंगे। जब भी अगर आप साइड स्टेप नहीं लेते, पीछे जाते हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी को फोर्स जनरेट करने का पूरा मौका मिलेगा, टारगेट पूरा देखने को मिलेगा, और वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए टारगेट एरिया को पूरी तरह से देखें, साइड स्टेप लें, साइड स्टेप लेके रिवर्स किक का प्रयोग कर सकते हैं, मगर समझी जा सकती है ये बात मेघालय के खिलाड़ी की कद काठी थोड़ी सी कमजोर है, कम है,
जिसका फायदा असम के खिलाड़ी उठा रहे हैं। ये प्रयास उनका अच्छा था। 3-2 का स्कोर अभी तक सुनिश्चित है। यहां पर अभी 1 अंक और उनको अर्जित किया है उन्होंने। यहां पर गम शील्ड बार बार उनकी गिर रही है, जिस वजह से खेल बाधित हो रहा है। तो खेल को बाधित आप नहीं कर सकते इंटेंशनली। यद्यपि अगर आप गम शील्ड को गिराते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। यहां पर इंटेंशनली नहीं है। यह देखना रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह देखे यह इंटेंशनली गिरी गई है या स्वाभाविक तौर पर खेल के दौरान गिर गई है। तो यहां पर रेफरी ने उस चीज को नजरअंदाज किया, स्वाभाविक तरीके से गिर गई थी। मगर बार बार लेग अटैक कर रहे हैं, सिंगल लेग अटैक कर रहे हैं। यह एक उनकी अच्छी रणनीति। इससे आप अपने प्रतिद्वंदी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो डिस्टर्ब करना भी एक रणनीति होती है कि आप बार बार, बेशक आपके पास अंक नहीं आ रहा, मगर आप उसके खेल को जब बाधित करते हैं तो आप उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके लिए मारने की क्षमताएं और ज्यादा एग्रेसिव वो हो जाता है, और एग्रेसिव करने पर कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। तो ये रणनीति आपकी अच्छी है। 5-4 का स्कोर बढ़त बनाने में कामयाब असम के। यहां पर बाहर गिरे हैं तो 2 अंक और मिलेंगे असम के खिलाड़ी को। तो यहां पर अब पूरी तरह से मुकाबला जो है विपिन, असम ने अपने पक्ष में कर लिया है। पहले चक्र की अगर हम बात करें तो 7-7 का स्कोर था, दूसरे चक्र में 15-2 का स्कोर रहा, तीसरे चक्र में 7-4। कुछ ही क्षण शेष है, वापसी कर पाना अब मैं समझ सकता हूं नामुमकिन सा लग रहा है मेघालय के खिलाड़ी के लिए, क्योंकि पूरी तरह से इंडोरेंस वर्कआउट उनका बहुत वीक लग रहा है अपने प्रतिद्वंदी असम के खिलाड़ी के अपेक्षाकृत। So we are at the business end of this contest. We had a tie in that first round. The second one was one-sided in favor of Assam, and in the third, Assam once again in a commanding position, and for repeated popping out of the gum shield, the official also awarding 2 penalty points to Assam. And the official hard pressed there to call for a break. Usually you hear the break call a lot faster, but both these fighters are really exhausted. And you can see that the fighter from Meghalaya is trying his best. And with that, the third round comes to an end. A clinical performance, a clinical third round by the fighter from Assam. Resounding win now. Nikesh Mondal, victor here in this particular bout, and moving on to the next round. बिल्कुल, सभी का अभिनंदन किया और बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया और खेल भावना के साथ सभी का अभिवादन किया, अपना थैंक्स प्रस्तुत किया। तो ये खिलाड़ी की अच्छी, हम कह सकते हैं, कार्यकुशलता है कि सभी का अभिनंदन किया। 7-7 का पहला राउंड रहा, 15-2 का दूसरा राउंड रहा, 12-4। तो 2 राउंड 2 और राउंड 3 जो है वो अपने पक्ष में करने में कामयाब हुए असम के खिलाड़ी निकेश मंडल, और इस मुकाबले को जीता। रोचकता बनी हुई है, दर्शकगण यहाँ पर पूरी तरह से भरे पड़े हैं इस खेल प्रांगण में। तो इससे समझा जा सकता है कि खेलों का स्तर इतना ऊंचा है विपिन, कि कोई भी दर्शक यहाँ से मुकाबले को छोड़कर जाने की इच्छा में नहीं है, और रोचकता पूरी बनी हुई है। अंत तक ये दर्शक हमारे साथ बने रहेंगे, और हम दूरदर्शन देखने वाले दर्शकों से भी यही आग्रह करेंगे, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि 75 किलो भार वर्ग का जो अगला मुकाबला है वह नागालैंड और मणिपुर के मध्य होगा, और यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा एक्शन से भरपूर होगा। That's right, expect a power-packed bout here. Nagaland taking on Manipur. And the official will be under pressure, especially when it's a 75 kg weight category. Nagaland in red, Manipur in blue. Nice connect. And right away, there's a takedown. Manipur, Soiban.
Soibam Singh registering a 2 for that takedown. Breaking up play. The official calling these fighters to entertain this crowd. Spinning attack, not landing on that occasion and successfully outmaneuvering his opponent, pushing him off the platform. And sometimes that's what these audacious attacks are all about. Breaking the balance, breaking the momentum, breaking the plans of your opponent, and then getting him out of the platform. And smart play there, realizing that he was going to be off the platform and might have had a chance to lose out on this particular round, holding on to the gloves for dear life. Break called by the official. Another spinning attack, and once again following that up with a maneuvering move. And this seems to be a little bit of a pattern there. Once again, trying to leverage positioning on the platform, more importantly than the strikes. Very difficult to roll someone over your shoulder in this weight class. 75 kg category action here. Watching this second bout between Nagaland and Manipur. If you just joined us and if you're enjoying these broadcasts here at the second Northeast Olympic Games, Wushu, which is being conducted here in Shillong. Nagaland versus Manipur. Nagaland in red, Manipur in blue. Swinging over the top right, just missing the mark. Some of these punches are thrown with so much venom, one worries if there is a flush connect. 5-2. Manipur with a 3-point cushion in a good position now in this contest. Flush land there, faking the jab. And then landing that right outside kick onto the thigh for 2 points. Break call by the official. End of round 1, Manipur walks in with a lead. The blue corner with a better performance than the red. Slender margin, but definitely for dominating the platform. Manipur going in with round 1 in their kitty. But this is going to be even, Sanjeev. Not much separating these two fighters. बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम बात करें पहले मुकाबले में 4-5 का स्कोर रहा है, तो एक अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है। तो इससे साफ पता चलता है जब आप स्कोर लेते हैं, अंक अर्जित करते हैं, तो आपके खेल कौशल का भी मूल्यांकन होता है। ये एक अच्छे खिलाड़ी का खेल कौशल और ये दर्शकों से भरा हुआ खेल प्रांगण नेहरू कैंपस शिलोंग में, और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण यहाँ पर आप लोगों के लिए रोमांचकारी मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। एक रोचकता जो है वो पहले ही चरण से बनी हुई, और अब ये इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाएंगे। 75 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चलता हुआ 4-5 का स्कोर। नागालैंड ने पहले चक्र में 4 और मणिपुर ने 5 अंक अर्जित किए थे। दूसरा चक्र चल रहा है, ये दूसरा राउंड। ओ, बहुत ही सुंदर खेल, अच्छा परिचय दिया। 2 अंक और अर्जित होंगे यहां पर। दूसरा राउंड चल रहा है। प्रयास अच्छे, बाहर गिराने में कामयाब हुए। 2-1 का स्कोर। बहुत ही सुंदर, एक अच्छा प्रयास। 4-1।
प्रयास अच्छे हैं मगर उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित भी कर रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दोनों ही खिलाड़ियों को एक दूसरे से दूर किया। नागालैंड के खिलाड़ी काफी अच्छी बढ़त बनाने में कामयाब थे मगर 4-4 बराबरी का मुकाबला। लेग अटैक करना चाहते हैं, यहां पर एंकल होल्ड किया, गिराने का प्रयास था मगर संतुलन स्वयं का बिगड़ गया। एक अच्छा प्रयास, यहां पर पंच और लेग्स दोनों किकिंग, पंचिंग एंड किकिंग दोनों बहुत अच्छी नागालैंड की। 6-5 का स्कोर। ये बहुत ही सुंदर रोलिंग पोजीशन में किया। स्ट्रेट जैब, यहां पर शेल गार्ड रखना होगा मणिपुर के मुख्य खिलाड़ी को। बहुत जरूरी शेल गार्ड रखे, यद्यपि अगर शेल गार्ड नहीं रखेंगे तो नुकसानदेह होगा क्योंकि टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड कर रहे हैं नागालैंड के खिलाड़ी के प्रहार। और यहां पर ये दूसरा चक्र समाप्त हुआ दूसरे राउंड के साथ ही। यहां और 7-6 का स्कोर हो गया है दूसरे राउंड में। The official welcomes back both the fighters. Nagaland's Kei Sui Ding taking on Manipur's Soiban Manglem. A nice hook connecting there. Once again, both these players tiring, but even as they tire, giving their 100%. As both these fighters tire, their grappling will become a little more difficult. And a crucial push there, and this might be the momentum swing that Manipur was looking for. An opportunity now because the fighter from Nagaland will have to be a little careful, can't afford to go anywhere close to the edge. Because if he gets pushed out now, it's an automatic win in terms of the round for Nagaland. Very difficult to get up from one of these. You're down and out, and then you have 75 kgs on top of you. And the official does a count as well. Does he have his legs back? A brilliant move there. Brilliant move. From an impossible position, managing to showcase awareness on the platform right at the edge, and then flipping his opponent through. And moving his opponent out
Exhaustion, exhaustion. He wants to be up, but his legs just don't have it in him. And that's true sportsmanship. That's the spirit of championship. You give it your 100%. And when your hand needs to be raised, you just don't have energy. A brilliant win for Soiban M. Singh, taking that W for Manipur. और बिल्कुल 75 किलो भार वर्ग का ये आपका आखिरी मुकाबला है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मध्य। और आखिरी मुकाबला आज का 75 किलो भार वर्ग का। एक बहुत ही रोचक खेल देखने को मिले और कल हमें महिलाओं के मुकाबले देखने को मिलेंगे, एक्शन देखने को मिलेगा। मगर अभी बात करते हैं इस मुकाबले की। यह मुकाबला नेहरू कैंपस में चलते ये मुकाबले शिलोंग में। बहुत ही सुंदर एक अच्छा प्रयास और उस प्रयास को पूरी तरह से अंक में परिवर्तित कर पाते बहुत देर कर दी। आप कोई भी रणनीति अगर अप्लाई करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनको अंतिम क्षणों तक लेकर जाएं और पूर्ण करें। यह जैसा देखने को मिला, बहुत ही सुंदर खेल का परिचय अरुणाचल के खिलाड़ी द्वारा किया गया। बैंगराम तोंगी 2 अंक अर्जित किए हैं। अभी तक उन्होंने 2 अंक प्राप्त कर लिए हैं। 2-0 का स्कोर मिजोरम के विरुद्ध खेलते हुए। पहला राउंड चल रहा है, पहला चक्र चल रहा है। बाहर गिराने का प्रयास, धकेलने की कोशिश, मगर रेफरी द्वारा स्टॉप का निर्देश और एक्शन जोन के अंदर आकर ही खेलें ऐसा निर्णय। और बहुत ही सुंदर 2 अंक और मिलेंगे। लिफ्ट किया है उन्होंने ऊपर से। जब आप हवा में झूलते हुए अपने प्रतिद्वंदी को मैट पर गिराते हैं तो आपको 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये एक अच्छी रणनीति और ताकत तो साफ देखने को मिल ही रही है। विपिन, एक अच्छा खेल कौशल और 75 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला है। समझा जा सकता है ताकत का प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, मगर यह भी बात है दोनों ही खिलाड़ियों का भार वर्ग सेम है, तो ताकत दूसरे खिलाड़ी में अत्यधिक है जो इतना भारी वजन उठा रहे हैं। और यहां पर पुनः मिजोरम के खिलाड़ी जो 4-2 का स्कोर था, अब बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बराबरी पर लाने का प्रयास है उनका। पहला चक्र चल रहा है। आखिरी मुकाबला है आज का 75 किलो भार वर्ग का। और जो भी खिलाड़ी यहां पर विजयी होगा वो चुनौती देगा सिक्किम के खिलाड़ी को। और इससे अगला मुकाबला जो होना था वो सिक्किम और त्रिपुरा के मध्य था, मगर त्रिपुरा का खिलाड़ी एब्सेंट हुआ जिस वजह से वॉकओवर मिला है सिक्किम को। तो यहां पर जो भी खिलाड़ी विजयी होगा वो चुनौती प्रस्तुत करेगा क्वार्टर फाइनल में सिक्किम को। और पहला चक्र समाप्त हुआ। 2-5 का स्कोर रहा। मिजोरम 2 अंकों के साथ पहले राउंड में और अरुणाचल प्रदेश 5 अंकों के साथ पहले राउंड में। देखना होगा 1 मिनट का अंतराल विराम, उसके बाद ये खेल खिलाड़ी किस तरीके से अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते हैं और अंक अर्जित करेंगे। रणनीति बदलनी होगी। सेम स्ट्रेटेजी, सेम ही एक ही स्ट्रेटेजी पर आप नहीं खेल सकते। और ये जूरी, हेड जज एक दूसरे से मंत्रणा करते हुए, बहुत ही बारीकी से देखते समझते हुए, और यहाँ पर टाइम कीपर स्टॉप वॉच पर समय को देखते हुए। और यह मुकाबला पुनः दूसरा राउंड, दूसरे राउंड में गया यह मुकाबला 75 किलो भार वर्ग का। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मध्य चलता है यह मुकाबला।
लाल पोशाक में हैं मिजोरम के खिलाड़ी और वहीं उनको चुनौती देते हुए अरुणाचल प्रदेश के नीली पोशाक में। दूसरा राउंड। बहुत ही सुंदर, एक अच्छा प्रयास, एक अंक अर्जित किया। लिफ्ट करने में कामयाब रहे और उस कामयाबी को अंकों में परिवर्तित करना, यह बहुत अच्छी खेल कौशल। प्रहारक क्षमता दिखाई जरूर, मुक्के का प्रहार किया मगर टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड नहीं हुआ मुक्का। यद्यपि अगर हुक का प्रयोग करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि नज़दीक जब आप जाते हैं तो हुक और अपरकट का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक एक बराबरी पर चलता ये मुकाबला, अभी तक बढ़त बनाने में कामयाब हैं। पहले राउंड की अगर हम बात करें तो मिजोरम के खिलाड़ी ने अच्छा खेल कौशल दिखाया है अपना। प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को अंकों में परिवर्तित करना बहुत जरूरी। बहुत वेट कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अटैक करने आए तब मैं अटैक करूं, तो ये उनके लिए नुकसानदेह है। प्रथम प्रयास करना होगा, अपरकट का प्रयोग करना चाहा मगर दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार, इस प्रहारक क्षमता से कोई लाभ नहीं होगा। आप जजिस को प्रभावित नहीं कर पाएंगे इस प्रहारक क्षमता से। आपको सही मुद्रा में रहकर प्रहारक क्षमता दिखानी होगी। यहां पर ये कुछ हद तक अच्छा प्रयास था अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी का। 4-2 का स्कोर, बढ़त बनाने में कामयाब अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी। यद्यपि इस राउंड को भी जीतते हैं तो ये मुकाबला भी जीत जाएंगे, क्योंकि पहला राउंड अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे थे। मगर मिजोरम के खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं, इस मुकाबले को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं। 4-4 बराबरी का मुकाबला यहां पर, तो यहां पर ये तीसरे राउंड तक जाएगा शायद ये मुकाबला। जूरी ने रुकने का निर्देश दिया है, कुछ मंत्रणा कर रहे हैं और यहां पर यह मुकाबला समाप्त हुआ। विजय श्री किसको मिलती है और यहां पर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी ने जीता इस मुकाबले को। दोनों राउंड वह जीत पाने में कारगर रहा, तो यहां पर उन्होंने इस मुकाबले को जीता अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध। और 75 किलो भार वर्ग का ये आखिरी मुकाबला था जिसको कि जीता है BM ने, मिजोरम के खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध। और यहां पर कुछ जूरी के पास कोचिस अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए और असंतुष्ट हैं यहां पर। और यहां मैट पर बैठ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी को विजयी घोषित किया गया था। मिजोरम के खिलाड़ी असंतुष्ट हैं अपने इस निर्णय से, दिए गए निर्णय से। डिसीजन कैन नॉट बी चेंज, प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। यद्यपि नियमों का उल्लंघन करेंगे तो पूरी टीम को भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ऐसा नियम में है। तो इसलिए इस तरीके से विरोध प्रदर्शित करने का कोई लाभ नहीं होगा, अन्यथा आप अपनी टीम के लिए ही नुकसान उठा सकते हैं। सभी जजिस को बुलाकर मंत्रणा कर रही है जूरी। देखना होगा यहां पर निर्णय क्या रहेगा। और यहां पर मंत्रणा करते हुए आपस में जूरी और जजिस।
And with that, we come to the end of proceedings in day one. We've had a fantastic day here in Shillong. Wushu got started in the 48 kgs men's category. We went all the way up to the 75 kg men's category. And what an amazing day of Wushu. We've had 3 fantastic knockouts that we saw. And we will look forward to proceedings tomorrow when we come back here to watch the contest in the women's division. Do join us if you love Wushu. If you like strike fighting, do join us tomorrow as we bring proceedings to you live from here at the 2nd Northeast Olympic Games 2022. Signing off with my co-commentator Sanjeev, this is Vipin. Thank you. With my co-commentator Sanjeev, this is